Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine spending nearly 4 years of your life building something in complete agonizing secrecy. Oh, wow. Yeah, 4 years is an eternity in the tech world. It really is. You're pouring your time, your energy, your mental bandwidth, and your capital into a product. And the entire time you show it to almost no one. Right. No early focus groups, no beta testers. Exactly. You don't release a beta version to the public. You don't put up a landing page to harvest email addresses. You just, sit in a room and build. Which, if you know anything about the modern startup world, sounds like absolute heresy. Complete heresy. Yeah. It goes against everything we're told makes a successful company. I mean, for the last 20 years, the absolute dogma of the startup ecosystem, the gospel preached from Silicon Valley to university classrooms, is the lean startup. Right. The whole fail fast methodology. Yes, exactly. It demands that you launch an early minimum viable product, get it out there into the wild as quickly as humanly possible, gather feedback, and iterate. But the founders of a company called Figma, they chose a very different path, didn't they? They really did. Figma is now this ubiquitous, multi-billion-dollar browser-based design platform. But in their early days, they stayed in stealth mode for nearly 4 years. And they did that because they knew something incredibly crucial. Right. They knew that if they released an early, unfinished demo of their software, users might reject the tool entirely. And they wouldn't reject it because the core idea of collaborative design was bad. No, they'd reject it because of the performance limitations of web browsers at that specific time. Exactly. The software would be laggy, the graphics would tear, the experience would just be, frustrating. The feedback they'd get wouldn't be a true reflection of their grand idea. It would just be noise about browser performance. Pure noise. So by actively refusing to experiment in the open, they protected their vision and ultimately built a massive giant. It's a phenomenal story, honestly, and it perfectly isolates the exact tension we're exploring today. That agonizing choice every single founder or creator faces, right? Exactly. When do you test your idea in the open, exposing yourself to the market's brutal feedback? And when do you just put your head down, trust your vision, and launch the final product? It's such a tough call. It really is. And this specific tension, the mathematics and the psychology behind it, is the central focus of a truly remarkable article published in the prestigious Strategic Entrepreneurship Journal. Which is an FT50 listed journal, we should add. Yes, it is. The research we're looking at was conducted by Andrea Contigiani from the Fisher College of Business at the Ohio State University. Ohio State, right. Lien Denoo from Tilburg University, and Márton Hablicsek from Leiden University. Their work fundamentally challenges the assumptions we make about building new ventures. It's an incredibly rigorous piece of work. And, before we unravel their findings with you, we want to take a brief moment to speak directly to you, our listener, about how we curate the research we share. Right, we have some updates. We do. Starting from this month, March 2026, we've transitioned to a weekly schedule. So we're featuring an exploration every Sunday and Monday. And our new format is designed to give you the most thoughtfully curated knowledge possible. Exactly. Sundays are now dedicated to classic papers or comprehensive book reviews, while our Monday releases focus exclusively on publications from top-tier peer-reviewed journals, just like the incredible paper we're unpacking today. We deeply love our loyal subscribers, and we want to extend a sincere thank you for supporting this initiative. We really do. And we also want to be fully transparent with you about the soothing ethical reasoning behind this specific 2-day schedule. Right, because as you may know, AI-assisted shows like ours require immense computational power, and that places a heavy burden on nature and the climate. It really does. The back-end data centers required to process, synthesize, and produce this level of academic analysis, they require considerable water intake for cooling. Massive amounts of water. So by limiting our weekly releases to just these 2 highly curated days, it's our way of giving back to climate change initiatives. Exactly. It allows us to drastically minimize our environmental footprint without losing any of the richness, the depth, or the intimacy of our discussions with you. We feel very strongly about maintaining that balance between intellectual rigor and environmental responsibility. Absolutely. And, speaking of the academic ecosystem, we are well aware of the recent changes to the FT50 journal list for 2026. Yes, we wanted to address that. We want to emphasize to you that the outgoing journals from that list remain extremely prestigious. Oh, without a doubt.
We will absolutely continue to discuss their groundbreaking papers under our weekend classics and our regular Monday schedule. And for the convenience of new scholars joining our community, we will simply refer to them as Emeritus FT listed journals. Emeritus FT, right. I like that. And on a related note concerning the evolving landscape of academic publishing, we must formally acknowledge the announcement regarding the highly respected practitioner journal, MIT Sloan Management Review. Right, as announced, it will stop production from September 2026. We want to emphasize clearly that this cessation in no way diminishes its massive foundational contribution to the management research community over the last 6 decades. Not at all. We will keep featuring its timeless articles in our weekend classic section whenever possible. Because our core philosophy has always been, and will always remain, that we prioritize literature impact and absolute quality over any specific index, list, or ranking. We adhere strictly to these principles as an academic community show. Always. Thank you so much for listening and for continuing to support us as we navigate these incredibly fascinating topics. Yes, thank you. And we genuinely urge you to kindly make the time to read this thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed article for yourself. The link is right down in the show notes. Please do check it out. So getting back to the paper, let's step into the shoes of someone who is perhaps entirely new to academic research. Yeah, someone just about to start their own journey into the world of startups or product development. Exactly. If we had to strip away the complex mathematics for a moment, how would we summarize the core premise of this paper in the simplest, most jargon-free way possible? Okay, I would frame it exactly like this. Imagine you're holding the blueprint for a brand new business. Right. For the last 2 decades, the overwhelming advice from the business world has been to build a quick, cheap, duct tape version of your product, throw it at the wall and see what sticks. The classic MVP approach. Exactly. But what these 3 authors have done is build a mathematical model, specifically something called the Bayesian model, to figure out exactly when a startup should run one of those messy experiments. Versus when they should just bypass the testing phase entirely and launch the final polished product directly to the market. Right. The authors call this latter approach direct entry. And what their mathematical proof demonstrates definitively is that experimentation is not universally good. It's not a magic wand. It's really not. It only actually works, meaning it only adds value to your company if you meet 3 specific criteria. And those criteria are so important. First, you must be able to actually learn something meaningful from the feedback. Yes. Second, you must be able to afford the cost of changing your product based on whatever that feedback tells you. And third, you must be able to protect your brilliant idea from being stolen by competitors while you're out in the public square testing it. Okay, let's unpack this. Yeah. Because you just challenged 20 years of deeply ingrained startup gospel. I know, it's a big shift. I mean, for 2 decades, we've been living in the era of the lean startup. The concept of purposeful experimentation has completely dominated entrepreneurial thinking. We have books, global seminar circuits, entire venture capital frameworks built on the absolute necessity to iterate. Right. The prevailing wisdom is that sitting in a room building a perfect product is an act of pure vanity, and that the only truth comes from customer feedback. But what you're saying, and what this paper meticulously points out, is that there is a massive systemic blind spot in all of that literature. Yes. The startup world has completely ignored the fundamental costs of experimenting. It absolutely has. The literature surrounding the lean startup methodology has heavily romanticized the benefits of learning, while completely brushing past the strategic, financial, and competitive toll that learning takes on a fragile, early-stage venture. To understand exactly how the authors systematically dismantle this assumption, we need to look at the engine of their argument, their Bayesian framework. Now, the word Bayesian sounds intimidating, like high-level statistics. It does, but it's actually a beautiful, highly intuitive way to understand how humans update their knowledge when confronted with new information. It's, at its core, all about beliefs, right? Yes. Let's slow down and really map this out for the listener. How does a Bayesian model actually work in the context of a founder trying to build a company? Okay, so in a Bayesian framework, you always start with something called a prior belief. Right, your starting point. Exactly. This is your initial baseline hypothesis about what the market actually wants. Let's say you believe there's an 80% chance that consumers want a self-heating coffee mug. That is your prior belief. Right. The next step is to run an experiment. You release a minimum viable product, perhaps a rudimentary 3D printed version of the mug. You put it out into the world. The market then gives you a signal, which is the feedback. Maybe people complain that it's too heavy,
Or maybe they love the heat but hate the battery life. So you take that signal, you combine it mathematically with your prior belief, and you arrive at a new, updated perspective. And this newly updated reality is called your posterior belief. The entire logic of the lean startup is predicated on the idea that moving from your prior belief to your posterior belief always generates positive value for the company. I always thought of it like trying to navigate through a dense, disorienting fog. Ah, that's a great analogy. Your prior belief is your raw gut instinct about which way is north. Running an experiment is you shouting into the fog to see if anyone answers. Right, and the signal is the echo coming back through the mist. Exactly. And the posterior belief is you adjusting your walking path based on where you think the echo came from. But here's my pushback on this entire premise. Isn't any information good information? Right. When you're navigating that fog, why wouldn't a founder want to know exactly what the customer thinks? Regardless of the situation, why would you ever choose not to shout into the fog? That is the exact intuition that the lean startup movement relies on. The assumption is that information is always a net positive. But the mathematics of this model tell a starkly different story. They do. The authors introduced their first major parameter to explain why shouting into the fog isn't always smart. They call it market uncertainty. And in the model, they represent this with the mathematical symbol sigma squared, right? Yes, sigma squared. The fundamental principle here is this. If market uncertainty is very low, meaning you already know exactly what people want with a very high degree of certainty, then spending your limited time and capital to run an experiment is mathematically a complete waste of resources. Because you're literally paying money and losing time to learn what you already know. That makes intuitive sense, but how often does a founder actually know what the market wants with near certainty? I mean, the startup world is defined by unknowns. It is, but there are distinct exceptions, and the paper uses a magnificent real-world example to illustrate this. The origin story of Stripe. Stripe. When the Collison brothers were building Stripe, which is now a colossal payment processing platform, their specific target demographic was software developers. Right. They wanted to make it incredibly easy to integrate credit card processing into web applications. Now, who were the founders? They were software developers themselves. They were actively experiencing the exact friction, the exact agonizing pain points of trying to build apps and integrate clunky legacy banking systems. They knew the problem intimately because they were the market. For them, the market uncertainty, the sigma squared, was incredibly low. Right. They didn't need to put out a messy, half-finished payment gateway just to have other developers tell them, yes, integrating legacy banking APIs is currently a nightmare. They already knew it was a nightmare. They lived it every day. So in their case, setting up a focus group or releasing a buggy MVP would have been totally redundant. It would have been a waste of time. They could safely bypass that entire noisy experimentation phase and just focus their resources entirely on building a robust, finalized product through direct entry. Precisely. The value of the information they would have gained from an experiment was practically zero, because their prior belief was already perfectly aligned with the market peak. But let's contrast that with another company the paper highlights, Mukhopadhyay, right. Yeah. Their mission was to provide clean, affordable solar energy to homes in Africa. Specifically aiming to replace highly dangerous and expensive kerosene lamps. Now think about the landscape Mukhopadhyay was facing compared to Stripe. It's completely different. They aren't building software for their peers. They're building physical infrastructure for a radically different demographic in an emerging market. Exactly. They faced massive, overwhelming uncertainty on multiple fronts. They didn't know exactly what the physical solar product should look like to best serve a rural household. They didn't know the exact durability requirements. And critically, they didn't know how the payment methods would work in regions with entirely different, often unbanked financial infrastructures. Because their market uncertainty, their sigma squared, was overwhelmingly high, choosing direct entry would have been financial suicide. They would have built millions of units of the wrong product with the wrong payment plan. In Mukhopadhyay's case, experimentation wasn't just a helpful suggestion. It was mathematically vital to their survival. They had to test pay-as-you-go models using mobile money. They had to test solar panel durability. So we established this initial sliding scale. If you are solving your own deeply understood problem, you might be better off keeping quiet and building directly. But if you are solving a highly novel problem in an unfamiliar terrain, you absolutely have to test the waters.
This bridges us perfectly into what I think is the most fascinating concept in the first half of the paper. Let's say you're like in COPA. You accept that you need to experiment. You put your MVP out into the world. But what if the customer feedback you get back is basically speaking a different language? Ah, yes. What if the echo coming back through the fog is so distorted that you can't tell if it's coming from the north or the south? This is where we dive into the unidimensional model's next critical variable, which the authors brilliantly define as signal uncertainty. And in the mathematical formulas, this is represented by rho squared. Yes, rho squared. Signal uncertainty measures how accurately the feedback from your minimum viable product actually reflects the true underlying peak of the mainstream market's desires. It's like trying to tune an old analog radio while you're driving through a massive thunderstorm. That is a perfect way to visualize it. You're turning the dial, which represents your continuous experimentation, but all you hear through the speakers is crashing static. And you're desperately trying to find a clear melody, a clear signal of what the customer wants in all that noise. But at some point, you have to realize that you're bearing all the immense frustration of turning the dial. You're taking your eyes off the road, but you aren't actually hearing the music. You're better off just turning the radio off entirely and trusting your gut to navigate the road. That analogy captures the mathematics perfectly. But we need to ask, why would that feedback be noisy in the real world? What actually causes the static? The authors point out a few structural reasons why an MVP might generate a terrible signal. One major reason is the early adopter skew. The early adopter skew. Let's say you release a very rough, highly technical prototype of a new software tool. Because it's rough and requires a lot of setup, the only people willing to use it are highly technical power users. Right, the tinkerers, the people who love playing with broken things. Exactly. They give you a ton of feedback. They tell you they want more customization, more command line interfaces, more complex settings. So, you dutifully update your posterior belief based on their signal. You build exactly what they ask for. But when you finally launch the product to the mainstream market, the average consumer who just wants a simple one-click solution, it fails spectacularly. The early adopters gave you a loud signal, but it was fundamentally disconnected from the true market peak. Another reason for high signal uncertainty is that your venture team might simply lack the internal analytical skills to properly interpret the data. You might have thousands of data points, but if you don't know how to separate the signal from the noise, the information is useless. If the signal is too noisy, if rho squared approaches infinity, to use the paper's mathematical terminology, the model proves undeniably that you bear all the financial and strategic costs of running the experiment, but you reap absolutely none of the informational benefits. You just get confused. Precisely. And this mathematical reality brings us right back to our opening story about Figma. Right, Figma is the ultimate case study in avoiding signal uncertainty. Their founders deeply understood this concept, even if they didn't use the term rho squared. They knew they were building a highly complex, vector-based design tool meant to run entirely inside a web browser. If they had followed the lean startup playbook and released an MVP in year one, the web browsers of that specific era, before technologies like WebGL were fully optimized, would have absolutely choked on the heavy graphics processing. The tool would have been incredibly slow. It would have crashed constantly. And the feedback from the market, the signal they would have received, would have been overwhelmingly negative. Users would have screamed, "This is terrible, we hate it, give us back our desktop applications." But, and this is the crucial part, that feedback would have been pure noise. Exactly. It wouldn't have meant that the foundational idea of collaborative cloud-based design was a bad idea. It just meant the browser technology wasn't ready to deliver a clean signal. Figma recognized that an early launch would generate a high noise signal that might demoralize their team and scare off their investors. So they made the highly calculated, mathematically optimal choice to stay in stealth mode. They waited. They waited until the underlying browser technology caught up so that when they finally launched their product, the signal they got back from the market would be clear, actionable, and truly reflective of the product's value, not the browser's limitations. It was a brilliant, incredibly disciplined avoidance of signal uncertainty. But let's push this model even further. Let's play the devil's advocate. Okay, let's hear it. Let's assume you get incredibly lucky. Let's assume you run an experiment, you shout into the fog, and the feedback you get is pure, crystal clear, and tells you exactly, with zero static, what the market wants. The utopian scenario. Exactly. Even in that utopian scenario, you still aren't out of the woods.
because acquiring the knowledge is only step one. Right, and this brings us to the next massive contribution of the paper: the hidden costs of adaptation and appropriability. Because getting the feedback is only half the battle. Yeah. You still have to physically do something with it. The lean startup often treats the act of pivoting as if it's as simple as changing a line of code or flipping a switch. But the authors mathematically formalize the reality of this through a parameter called the cost of adaptation, represented by the Greek letter phi. The logic here is brutal. If the market tells you that your initial product design is slightly off-center, you have to pivot to meet that demand. But pivoting is never free. It requires time, massive physical and mental effort, and critically, financial capital. But hold on, in the modern software world, code is notoriously malleable. You can push an update to an app overnight. Are you saying adaptation costs actually apply to tech startups, or is this primarily a hardware problem? Like if I'm building a social media app, isn't my cost of adaptation practically zero? It is a common misconception that software has zero adaptation cost. It might be lower than hardware, but it is never zero. Right. Think about technical debt. Think about architectural lock-in. Exactly. If you build the foundational database architecture for a social media app, assuming users want public broadcasting, and the market feedback tells you they actually want end-to-end encrypted private messaging, you can't just flip a switch. You might have to tear down the entire back-end infrastructure, throw away 6 months of engineering work, and start from scratch. That is a massive cost of adaptation. That makes a lot of sense. The deeper you build, the harder it is to pivot, regardless of the medium. Exactly. And the mathematics of the model show that if your cost of adaptation, your phi, is inherently high, then direct entry might actually be your optimal choice, even if you are uncertain about the market. If retooling your factory line or rewriting your core backend is going to bankrupt the company, you simply cannot afford to learn that you are wrong. You're better off taking your best educated guess and launching, because the cost of experimenting and then pivoting exceeds your total capital. Here's where the dynamic gets even more treacherous, though. It's not just the internal cost of changing your own product, it's the external cost of showing your hand to the world. The second hidden cost they explore in this section is appropriability. Putting an MVP out into the world isn't just asking customers for feedback. It's basically taking your highly confidential playbook, walking over to the opposing team's locker room, and handing it to them before the game even starts. That is exactly what appropriability measures. Represented by the parameter R, it calculates how easily someone else can appropriate or steal your idea once you reveal it. The classic lean startup methodology essentially assumes you are operating in a vacuum. It assumes you can put a quirky product out there, gather data from friendly customers, and calmly retreat to your laboratory to iterate and improve. But real markets are violently competitive. They're Shark Tanks. They are. If you operate in an industry where ideas are easily copied, where the barriers to entry are low, launching an early MVP is essentially doing free market research for your best-funded competitors. They can watch your public beta. They can read the complaints your early users post on Reddit. They can see exactly what features are resonating. And then they can simply use their superior engineering resources and massive war chests to build the finalized, perfect product faster than you can manage your adaptation costs. You take all the risk of experimenting, and they reap the reward of the finalized posterior belief. The paper uses a fantastic example of a company called Surge AI to illustrate this danger. Surge AI, right. They operate in the IT and data labeling space. And as we know, in software and IT, appropriability is notoriously low. You can't easily patent a user interface or a specific workflow. Brilliant ideas can be cloned in a matter of weeks by a skilled, well-funded engineering team anywhere in the world. So knowing this, what did the founders of Surge AI do? They completely ignored the lean startup playbook. They didn't hire an aggressive PR team to shout from the rooftops about their revolutionary new paradigm. They didn't run a loud, highly publicized public beta to gather feedback. They stayed completely under the radar. They correctly assessed that their appropriability parameter was incredibly low, meaning the risk of theft was incredibly high. Exactly. They skipped that traditional, noisy experimentation phase entirely in order to protect their intellectual property. They just let the product speak for itself to a very closed, highly trusted looch of enterprise users. They didn't announce their presence until they had already hit massive, undeniable revenue milestones. They protected their playbook until they had already won the game. It's a textbook, masterful application of the model. If your R, your appropriability, is low, the value of public experimentation plummets dramatically.
often below zero. But up to this point, the paper has primarily looked at external market forces. Competitors, adaptation costs, signal noise. Where the authors take the model next is truly fascinating because they turn the lens inward. They look deep into the psychology of the founders themselves. This brings us to a major pivot in the paper: the inclusion of the founder's mind, personal bias, and how that impacts Bayesian updating. I found this part of the research to be incredibly revealing about human nature. Because we've been talking about the math as if the founder is a perfectly rational, objective robot assessing the landscape. But founders are human. They are deeply human, and the authors mathematically account for this by incorporating a parameter for biased priors. In the real world, a founder's initial idea, their starting point, their cherished prior belief, might not just be slightly off. It might be objectively, wildly, completely detached from what the market actually wants. Maybe they misread a macroeconomic trend. Maybe they fell in love with a piece of technology looking for a problem. Or maybe they're just deeply, stubbornly in love with a fundamentally flawed concept. So how does a massive, stubborn bias change the math of whether you should experiment? The mathematical model proves something highly counterintuitive here. The greater the founder's initial bias, the higher the mathematical value of experimentation. Think about it geographically. If your prior belief is that the market peak is exactly where you are standing, but the true market peak is actually 10 miles away, you are operating with massive bias. In this scenario, every single step you take through experimentation, every harsh piece of feedback you get, brings you dramatically closer to viability. The distance you travel from your flawed prior to a more accurate posterior is huge, meaning the value of the information you gained is immense. This is such an interesting paradox. Founders are famously, almost pathologically overconfident. It is practically a psychological requirement for the job, to believe you can change the world when the statistical odds say you will inevitably fail. So does this mathematical model imply that the most arrogant, most biased founders are actually the ones who desperately need the lean startup method the most? In a strict mathematical sense, absolutely yes. If a founder's internal belief is radically detached from reality, they have the most absolute value to gain from a harsh, uncompromising dose of market feedback. They need the experiment to shatter their illusion, provided, of course, that the signal they get back isn't too noisy to interpret. If they rely on direct entry with a massively biased prior, they are mathematically guaranteed to launch a product that fails. The paper highlights the story of Cruise Automation as the perfect case study for overcoming a deeply biased prior. When Cruise started, their initial vision, their deeply held prior belief, was that they were going to build retrofit kits for self-driving cars. The founders genuinely believed that average consumers wanted to take their existing regular Honda or Toyota, buy a complex box of sensors and cameras, and strap this technology onto the roof and steering column to make the car autonomous on the highway. They believed the market peak was an aftermarket upgrade kit. And that prior belief, while innovative, was heavily biased. It was geographically very far away from the true peak of consumer desire. But Cruise didn't just lock themselves in a garage and build the perfect retrofit kit. They engaged in rigorous experimentation. They put early iterations of this concept in front of potential partners, regulators, and everyday users. And the signal they got back provided a massive ego-bruising reality check. The market told them unequivocally, we do not want to hack our own cars. We don't want a clunky retrofit kit that voids our warranty. We want fully autonomous vehicles built from the ground up, seamlessly integrated. Because Cruise chose to experiment, and because they were mathematically rational enough to listen to the signal, they were able to correct that massive internal bias. They executed a hard, expensive pivot. They completely abandoned the aftermarket retrofit kits, which was their original baby, and started developing fully self-driving cars from scratch. That agonizing willingness to update their posterior belief, to admit their prior was biased, ultimately led to them being acquired by General Motors for over $1 billion. It is such a profound realization. If they had chosen direct entry based on their biased prior, if they had refused to shout into the fog, they would have spent years and millions of dollars building the world's most perfect retrofit kit that absolutely no one on Earth wanted to buy. Exactly. It perfectly validates the model's assertion that high bias demands high experimentation. But up until this specific point in our discussion, we have been analyzing startups through a simplified lens. We have been treating products as if they are a single, simple line, a unidimensional choice. You test the product or you don't. But as we all know, a modern product, whether it's a self-driving car or a software platform,
isn't just one thing. A car is an incredibly complex web of interacting variables. The AI software, the LiDAR hardware, the supply chain logistics, the regulatory compliance, and the consumer sales model. It is multidimensional. And this leads directly to the paper's major groundbreaking expansion, the multidimensional model and the concept of RTE. This is where the math goes from elegant to truly formidable. Walk us through exactly how the authors expand their Bayesian framework to account for the chaotic reality that real products have dozens of different dimensions. The authors acknowledge that a product isn't a single point. It is a vector of features. A startup might face uncertainty on feature A, complete confidence on feature B, and high adaptation costs on feature C. To help founders navigate this multidimensional chaos, the authors introduce a brilliant, unifying mathematical metric called the return to experimentation, or RTE. RTE, return to experimentation. How exactly is that calculated? The RTE is a single mathematical threshold. It is essentially a formula that allows a founder to weigh the expected informational benefit of experimenting on one specific dimension of their product against the total cost of running that specific experiment. The formula incorporates all the parameters we've discussed. The market uncertainty of that specific feature, the signal clarity, the adaptation cost, and the appropriability risk. The operational rule becomes remarkably simple on the surface. For any given dimension, if the return to experimentation is mathematically greater than the cost, you experiment on that dimension. If the RTE is lower than the cost, you do not experiment and you move toward direct entry for that specific feature. But practically speaking, how does a founder actually execute this? Let's ground this in a real-world scenario. If I am opening a new restaurant, my product has multiple dimensions. I have the culinary menu, I have the physical location and interior design, and I have the pricing structure. I have limited funds. I can't possibly afford to experiment perfectly on all three. How does the RTE framework help me decide what to test? The power of the RTE is that it allows you to isolate and evaluate those dimensions independently. The paper uses the origin story of DoorDash to make this multidimensional matrix incredibly concrete. When the founders of DoorDash started in Palo Alto, they were facing a complex, multidimensional problem. They needed to answer two distinct, massive questions to know if their business was viable. First, was there actually genuine consumer demand for premium restaurant food delivery in the suburbs? And second, could they build the highly complex logistical infrastructure to dispatch drivers efficiently to fulfill that demand? Those are two entirely different categories of problems. One is a question of human psychology and desire. Do people want this? The other is a question of operational physics and routing algorithms. Can we actually deliver it while it's still hot? Exactly. They are independent attributes of the same product. What DoorDash did to evaluate their RTE was brilliant. To test the first dimension consumer demand, they didn't build a massive, complex app. They simply went around town, found PDF menus of local restaurants, put those PDFs up on a highly basic static website, and added a Google Voice phone number. When a customer called to order, the founders themselves would get in their own cars, drive to the restaurant, order the food, and deliver it to the house. That is incredibly scrappy. It was. By doing this, they tested the demand dimension incredibly cheaply. They generated a clear signal, people were calling the number, with almost zero adaptation cost and very low IP risk. Simultaneously, by doing the driving themselves, they were gathering raw data to test the second dimension, dispatch logistics. They were manually figuring out the driving routes, the restaurant prep times, and the friction points of delivery. Because these two dimensions were relatively independent of each other, and the financial costs of testing them in this manual, scrappy way were extremely low, the mathematical model proves that full experimentation, meaning testing both dimensions simultaneously before writing complex code, was the mathematically optimal strategy. The return to experimentation on both the demand vector and the logistics vector was massively higher than the cost of putting up a PDF and driving a Honda Civic. So the lesson there is clear. If the dimensions of your business are independent, and you can find a way to test them cheaply without exposing your IP, you should test them all. But what happens when things aren't independent? What happens when things are hopelessly entangled? This takes us to the next vital concept in the paper: correlated attributes and the proxy test. What happens when two dimensions of a business are highly correlated, meaning they're deeply intertwined, but one of them is vastly cheaper to test than the other? The authors break down a profoundly counterintuitive finding from the multidimensional model here. We just established that for independent variables, you evaluate the RTE for each.
But if two dimensions are highly correlated, meaning that how a customer reacts to dimension A strongly predicts how they will react to dimension formata, B, the math shows that learning about one automatically, statistically, teaches you about the other. This is the concept of covariance. Let's explain covariance simply for the listener. Think of covariance like the weather. If I know the weather in Manhattan is currently a torrential downpour, I have a very, very strong statistical probability of guessing the weather across the river in Brooklyn. They are highly correlated dimensions. I don't need to pay two separate meteorologists to go to both locations. Learning about one gives me the signal for the other. Therefore, the mathematical model dictates that you do not need to run experiments on both dimensions. You only need to run the cheaper experiment, and you can mathematically infer the results of the more expensive one. That is essentially a legal cheat code for startups, especially those operating in heavily regulated industries. And the paper proves this dynamic by diving deep into the fascinating examples of two specific startups, Loyal and Lien Labs. Yes, both of these are highly innovative, cutting-edge health startups. They are working on incredibly complex biological therapies and longevity drugs. Now, their ultimate long-term goal, their true market peak, is human health. They want to sell therapies to humans. But testing a brand new cellular therapy or a longevity drug on the human dimension involves navigating the labyrinth of the FDA, running massive, multi-year, multi-phase clinical trials, and spending literally billions of dollars in regulatory and safety costs. The cost of experimentation in the human dimension is astronomically prohibitively high. So what did the founders of Loyal and Lien Labs do? They didn't start by testing on humans. They executed a brilliant proxy pivot. They turned to veterinary medicine. Started testing their longevity therapies on dogs. Exactly. And why is that mathematically sound? Because human biology and canine biology, while obviously different, are highly correlated dimensions when it comes to these specific cellular mechanisms of aging and cancer. If a specific genetic therapy successfully extends the healthy life of a dog or cures a specific canine lymphoma, the signal generated from that experiment provides massive, mathematically rigorous insight into how that same underlying mechanism will likely perform in humans. It's the Brooklyn weather predicting the Manhattan weather, just applied to mammalian biology. Precisely. By pivoting to test on dogs, these startups operated in a regulatory space with a tiny fraction of the costs and timelines associated with human trials. Testing the canine dimension was the absolute mathematical optimum because it allowed them to learn invaluable, high-fidelity information about the human dimension without ever paying the billion-dollar human dimension price tag. They leveraged covariance to maximize their return to experimentation. That is absolutely fascinating. You map the matrix of your product, find the proxy dimension that is cheap, and use it to illuminate the expensive dimension. But the authors save their most mind-bending, counterintuitive proof for last. It is a concept that fundamentally challenges how every product manager in the world prioritizes their roadmap. They call it the big trap. This is a phenomenal piece of mathematical deduction, and it requires us to really visualize the multi-dimensional space. Let's walk through a highly specific hypothetical to understand how dangerous this trap is. Imagine a startup that is building a revolutionary new product, an AI-powered smart crib for babies. Okay, an AI smart crib, I'm following. This product has three distinct major dimensions that the team needs to evaluate. Dimension A is the highly complex AI software that analyzes the baby's cries to predict if they are hungry, tired, or in pain. Dimension B is the physical hardware, the quiet robotic motor that automatically rocks the crib based on the AI's analysis. And Dimension C is the business model, specifically a monthly subscription fee required to access the sleep analytics dashboard. Three distinct dimensions: software, hardware, and pricing. Exactly. Now, the founding team sits down in a conference room. They use the Bayesian formulas we've discussed, and they evaluate the return to experimentation for each dimension individually. They look at the software, the AI cry recognition, and they realize the market uncertainty is huge, but it's relatively cheap to test with an app. They conclude that testing Dimension A, the AI software, gives them the highest individual return to experimentation. It mathematically ranks as the single best, most valuable experiment they can run in isolation.
Naturally, as a founder or a lead investor, you would look at that analysis and assume you should put all your time, your engineering budget, and your focus into testing Dimension A. You say, the AI is the most critical feature, it has the highest RTE, let's pour all our resources into testing the software first. That is exactly what human intuition tells you to do. You rank your priorities and execute the top one. But the multidimensional Bayesian model proves that this behavior can be a devastating statistical trap. Because of how covariance and signal noise interact across a complex matrix, the math proves that running the single best experiment in isolation testing the AI software alone might actually yield a mathematically worse overall outcome for the survival of the business than testing a combination of the two individually inferior dimensions. Meaning testing the hardware motor and the subscription pricing together. Wait, I need you to explain that to me like I'm 5 years old. How can testing your mathematically best feature possibly sink the company? It happens because variables interact in ways that compound risk. Let's say you only test Dimension A, the AI software. You release a beta app to test the cry recognition. But maybe the microphones on the parents' phones are low quality, so the AI gets confused. The signal you get back is incredibly noisy and negative. If you only test A, you might look at that negative signal and falsely conclude that the entire smart crib business is unviable and you shut the company down. But what you miss is the covariance between Dimension B and C. The hardware and the pricing. Yes. Perhaps parents who are willing to buy a premium piece of robotic hardware for their nursery are highly correlated with parents who are completely willing to pay a $20 monthly subscription for peace of mind. Dimension B and C are deeply interconnected. If you had run a combined scrappy experiment on B and C, perhaps selling a basic rockin' crib with a simple subscription newsletter, you would have discovered a massive, highly profitable core business that could have funded the long-term development of the AI software. By hyper-focusing only on the single best variable with the highest individual RTE, you blinded yourself to the interconnected viability of the rest of the product vector. The variance of the whole system collapses more efficiently when you test the correlated lesser variables than when you isolate the noisy best variable. I am genuinely amazed by that logic. It completely upends how we plan product roadmaps. Founders almost always sit in those conference rooms. They try to isolate the one make-or-break feature, the killer app, and they pour their entire runway into testing that one thing. But this paper mathematically proves that by doing so, you might be leaving the company entirely exposed to a combination of risks in the lesser variables that ultimately sink the ship. You have to look at the holistic matrix of your product. You cannot just look at a ranked list of features. You have to evaluate the ecosystem of the product itself. It forces a completely different, infinitely more rigorous level of strategic thinking. You cannot look at experiments in a vacuum. You have to look at how the overall uncertainty of the entire enterprise collapses when you test combinations of features against each other. So, bringing this immense, complex journey all together, as we move into our final thoughts, what are the ultimate key takeaways from this incredibly dense, powerful paper? Let's divide this. Let's start with the academic scholars listening. How does this mathematical framework actually advance the field of strategic entrepreneurship literature? For the academic community, this paper's theoretical contributions are profound and stabilizing. Primarily, it successfully microfounds what is known in the literature as the theory-based view of entrepreneurship. The theory-based view essentially argues that successful founders act as empirical scientists. They formulate theories about the market and systematically test them. But this paper proves mathematically that simply having a theory, even a wildly biased one, is insufficient. You must be structurally and technically capable of interpreting the signal you get back, meaning you need a low rho squared, a low signal uncertainty. If your experiment is noisy and you can't interpret the feedback, your scientific theory is useless. Furthermore, this specific model provides a highly rigorous mathematical boundary condition for the vast literature on organizational learning. For decades, we've studied how organizations learn, but this paper mathematically defines exactly when the financial costs of adaptation, combined with the strategic risks of intellectual misappropriation, completely outweigh the benefits of acquiring new knowledge. It puts a definitive limit on the value of learning. And for the practitioners tuning in, the founders in the trenches, the venture capitalists writing the checks, the product managers fighting for budget, the ultimate lesson here feels like a massive, flashing warning sign. Stop applying the lean startup methodology blindly. It is not a religion.
It is a tool. And like any tool, whether it's a hammer or a scalpel, it only works in highly specific contexts. Before you write a line of code for an MVP, before you put up a landing page, you have to ruthlessly, honestly evaluate your specific landscape. Exactly. You must ask the hard questions. Are you actually facing high market uncertainty, like Mukhopadhyay in Africa? Or are you just scared to launch a product you already understand, like Stripe? Is the signal you're going to get from early adopters going to be crystal clear? Or will it be drowned in technical noise because your prototype is too clunky, like Figma? What is your actual cost of adaptation? If the market says turn left, do you have the capital and the architectural flexibility to actually rebuild the engine, or are you locked in? And crucially, do you have IP protection, or are you just operating like SEJ, where an MVP is just a free focus group for your competitors? You have to use this concept of the return to experimentation, the RTE, to decide if stealth mode is your best weapon, or if a scrappy manual MVP like DoorDash driving their own deliveries is the right path. And if you are operating in a heavily regulated, expensive industry, you must look for those correlated, cheap proxy dimensions to test, just like Loyal did by pivoting to veterinary medicine. It is a profoundly practical, actionable toolkit, ingeniously hidden inside elegant Bayesian mathematics. But of course, as with any truly great academic model, answering these questions only opens the door to even deeper, more complex mysteries. The paper leaves us with a few provocative thoughts to mull over as we look toward the future of this research. For instance, the Bayesian model here fundamentally assumes that founders are perfectly rational, risk-neutral actors. It assumes they calculate the expected value, look at the RTE threshold, and make a cold, calculated robotic choice. But we know humans are not built that way. What happens to this elegant math when we introduce the very real, visceral human emotion of fear? Right. What happens when a founder is absolutely terrified of failure? What happens when their ego is so tied to the prior belief that they refuse to see the posterior? Exactly. How does extreme risk aversion, the deep psychological dread of getting a negative signal back from the market, of finding out your baby is ugly, change the calculus of the RTE threshold? A highly risk-averse founder might artificially, subconsciously inflate the perceived cost of experimentation simply to avoid facing reality. Furthermore, this model beautifully captures entry as a binary single-shot choice. You evaluate the math and you either experiment or you launch directly. But what happens when we zoom in and look at the life cycle of a startup not as a single grand choice, but as a continuous, endless, exhausting sequence of micro-experiments over 10 years? How does the math of appropriability change when you are constantly releasing small updates? And perhaps most daunting of all, how does the mathematical proof hold up when the market peak itself isn't sitting still? That is the ultimate nightmare scenario. What if, while you are spending 6 months running your carefully calculated, perfectly optimized experiment, the macro culture shifts, a new technology like generative AI drops, and the exact target you are aiming for completely moves? You finally get your pure signal, but it's telling you where the market used to be. It is the ultimate moving target in a dense fog. The complexity is infinite, which is why this field of study is so relentlessly fascinating. You have given us and our listeners an incredible amount of conceptual frameworks to think about today. We have systematically dismantled a 20-year-old dogma that said, always be testing. And we have replaced it with a rigorous mathematical framework that requires deep, uncompromising honesty from anyone brave enough to build something new. Thank you so much for joining us for this extensive exploration. As you go out into the world this week, whether you are building a disruptive new company, designing a complex research paper, or just navigating the uncertain terrain of your own career, remember to step back and ask yourself, are you actually listening to a clear, actionable signal? Or are you just hopelessly tuning a broken radio in the middle of a thunderstorm? Take care, everyone. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। লিন স্টার্টআপ বা দ্রুত বাজার যাচাইয়ের তত্ত্বে তো একটা খুব প্রচলিত নিয়ম আছে, মানে যত দ্রুত সম্ভব একটা প্রাথমিক প্রোডাক্ট, যাকে আমরা এমভিপি বলি, সেটা তৈরি করে বাজারে ছেড়ে দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, এর মূল উদ্দেশ্যটাই থাকে আসল গ্রাহকদের কাছ থেকে দ্রুত ফিডব্যাক নেওয়া, মানে বুঝতে পারা কোথায় ভুল হচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী ভুল শুধরে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। একদম।
সিলিকন ভ্যালিতে তো এই দর্শনটা প্রায় মন্ত্রের মতো জপ করা হয়, কিন্তু ব্রাউজার ভিত্তিক ডিজাইন প্ল্যাটফর্ম ফিগমা এর শুরুর দিকের গল্পটা ছিল একদম উল্টো, মানে স্রোতের বিপরীতে হাঁটার মতো। আচ্ছা, তারা তো বেশ কয়েক বছর একদম নীরবে কাজ করেছিল, তাই না? ঠিক তাই। তারা প্রায় 4 বছর ধরে সম্পূর্ণ গোপনে কাজ করেছিল। স্টার্টআপের ভাষা যাকে স্টেলথ মোড বলা হয় আর কি। মানে ওই 4 বছরে কোনো আর্লি রিলিজ ছিল না, গ্রাহকদের সাথে কোনো দ্রুত ফিডব্যাক লুপও তৈরি করা হয়নি। 4 বছর? প্রযুক্তি দুনিয়ায় এটা তো বিশাল একটা সময়। বিশাল সময়, আর এই নীরবতার কারণটাও বেশ চমকপ্রদ। ফিগমার প্রতিষ্ঠাতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে সেই সময়কার ওয়েব ব্রাউজারগুলোর প্রযুক্তিগত অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। ওই অবস্থায় যদি তারা একটা ডিজাইন টুল গ্রাহকদের হাতে তুলে দিত, তবে গ্রাহকরা আসলে টুলের ডিজাইন নিয়ে ফিডব্যাক দেওয়ার বদলে ব্রাউজারের ধীর গতি বা ল্যাগিং নিয়ে হতাশ হয়ে ভুল ফিডব্যাক দিত। ও আচ্ছা, তার মানে আসল সমস্যার জায়গাটা আড়ালেই থেকে যেত। একদম। আর সেই অস্পষ্ট বিভ্রান্তিকর তথ্যের উপর ভিত্তি করে যদি পুরো প্রোডাক্ট নতুন করে সাজানো হতো, তবে তা হতো চরম আত্মঘাতী। সবসময় দ্রুত এক্সপেরিমেন্ট করা বা বাজারে তড়িঘড়ি করে প্রোডাক্ট আনাটাই যে সঠিক সিদ্ধান্ত নয়, ফিগমার এই 4 বছরের প্রশান্ত নীরবতা তারই এক অকাট্য প্রমাণ। এখানকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকটি হল ফিগমার এই গোপনীয়তা কিন্তু বাজার হারানোর কোনো ভয়ের জায়গা থেকে আসেনি। আসলে এটি ছিল অত্যন্ত সুচিন্তিত একটা কৌশল। মানে বাজারের সংকেত যদি ভুল বা অপ্রাসঙ্গিক হয়, তবে তাকে ধ্রুব সত্য ধরে এগোলে যে কোনো উদ্যোগে মুখ থুবড়ে পড়বে। এক্সপেরিমেন্ট করা মানেই যে সফলতার নিশ্চয়তা, এই মিথটা ভাঙা খুব জরুরি ছিল। ঠিক সেই মিথ ভাঙার কাজটি আজ করা হবে। আজকের এই শান্ত, মগ্ন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দুই হল এই সূক্ষ্ম ধারণাটি। অত্যন্ত সম্মানজনক একটি FT50 তালিকাভুক্ত জার্নাল, স্ট্র্যাটেজিক এন্টারপ্রেনারশিপ জার্নালে প্রকাশিত একটি যুগান্তকারী গবেষণাপত্র নিয়ে আজ বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হবে। পেপারটির শিরোনাম হল Toward a Theory of Bayesian Experimentation in Early Stage Ventures। হ্যাঁ, আর ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির আন্দ্রেয়া কন্তিজিয়ানি, টিলবার্গ ইউনিভার্সিটির লিয়েন ডেনু এবং লিডেন ইউনিভার্সিটির মার্টন হাবলিসেকের লেখা এই পেপারটি স্টার্টআপ দুনিয়ার অনেক প্রচলিত ধারণাকেই নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। অত্যন্ত সময়োপযোগী একটা বিশ্লেষণ হতে যাচ্ছে এটি, বিশেষ করে যারা নতুন উদ্যোগ শুরু করার কথা ভাবছেন বা একাডেমিক গবেষণার সাথে যুক্ত আছেন, তাদের জন্য এটা চিন্তার জগতে নতুন একটা দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। একদম। তো এই গভীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রবেশ করার আগে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এই আয়োজনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপডেটের কথা জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। 2026 সালের মার্চ মাস থেকে এই সাপ্তাহিক আয়োজনটি সপ্তাহে 2 দিন সম্প্রচারিত হচ্ছে, প্রতি রোববার এবং সোমবার। রবিবারের আয়োজনগুলোতে মূলত ধ্রুপদী বা ক্লাসিক গবেষণাপত্র ও বই নিয়ে আলোচনা করা হবে। ঠিক। আর সোমবারের আয়োজনটি বরাবরের মতোই শীর্ষস্থানীয় পিয়ার রিভিউড জার্নালের নতুন গবেষণার উপর ফোকাস রাখবে। একটি বিষয় হয়তো অনেকেরই অজানা নয় যে বর্তমান সময়ের AI চালিত প্রযুক্তি এবং ডেটা সেন্টারগুলো প্রচুর পরিমাণে জল ব্যবহার করে, যা আমাদের প্রকৃতি এবং জলবায়ুর ওপর একটা নীরব অথচ বিশাল প্রভাব ফেলছে আসলে। একদম তাই। আর পরিবেশ সংরক্ষণের এই বৈশ্বিক লড়াইয়ে একটি ক্ষুদ্র কিন্তু কার্যকর অবদান রাখার জন্যই সম্প্রচার সপ্তাহে মাত্র 2টিতে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তবে এই সিদ্ধান্তে বিষয়বস্তুর বুদ্ধিবৃত্তিক গভীরতা বা গুণগত মান বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া হয়নি। অনুগত সাবস্ক্রাইবাররা যারা নিয়মিত শোনেন, তাদের এই পরিবেশ বান্ধব উদ্যোগে নিরন্তর সমর্থন জানানোর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। এই ধরনের পরিবেশগত সচেতনতা বর্তমান সময়ে সত্যিই খুব জরুরি। গবেষণার জগতে মানের সাথে আপোষ না করেও যে বৃহত্তর পৃথিবীর কথা ভাবা যায়, এটি তারই একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত। হ্যাঁ, এর পাশাপাশি জার্নাল ইন্ডেক্সিংয়ের একটি পরিবর্তন সম্পর্কেও সাহিত্যের অনুরাগী এবং গবেষকদের জানিয়ে রাখা ভালো। 2026 সালের FT50 জার্নাল তালিকার সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে এই আয়োজনের পেছনের টিম সম্পূর্ণ সচেতন। যে প্রখ্যাত জার্নালগুলো নতুন তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, সেগুলোর সম্মান, আবেদন বা গবেষণার মান কিন্তু এতটুকুও কমে যায়নি, একটুও না। নতুন গবেষকদের সুবিধার্থে সেগুলোকে ইমেরিটাস FT তালিকাভুক্ত জার্নাল হিসেবে সম্মান জানিয়ে রবিবারের ক্লাসিক বা সোমবারের আয়োজনে নিয়মিত আলোচনা করা হবে। একই সঙ্গে
সেপ্টেম্বর 2026 থেকে প্রখ্যাত প্র্যাকটিশনার জার্নাল MIT স্লোন ম্যানেজমেন্ট রিভিউয়ের প্রকাশনা বন্ধ হওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার বিষয়টিও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করা হচ্ছে। গত 6 দশকে ম্যানেজমেন্ট গবেষণায় এবং প্র্যাকটিশনারদের দিক নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে এর যে অবদান তা কখনোই ভুলার নয় আসলে। একদমই ভোলার নয়। যে কোনো ইন্ডেক্স বা সাময়িক তালিকার চেয়ে সাহিত্যের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব এবং গুণমানকে এখানে সবসময় সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ভবিষ্যতেও উইকেন্ড ক্লাসিক বিভাগে এর প্রবন্ধগুলো নিয়মিতভাবে তুলে আনা হবে। সত্যি তো, গবেষণার আসল মূল্য কোনো নির্দিষ্ট কাঠামোগত তালিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। ঠিক তাই। তো সেই চিন্তাধারাকে নাড়া দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে আজকের মূল আলোচনায় ফেরা যাক। শো নোটে দেওয়া লিঙ্ক থেকে এই কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ হওয়া প্রবন্ধটি সময় নিয়ে পড়ার জন্য সবার প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল। যারা মাত্র গবেষণার জগতে পা রাখছেন তাদের জন্য খুব সহজ ভাষায় পেপারটির মূল ভাবটি প্রথমে একটু তুলে ধরা যাক। হ্যাঁ, একটু সহজ করে প্রেক্ষাপটটা তৈরি করে নেওয়া ভালো। চারদিকে সবসময় শোনা যায় স্টার্টআপদের প্রচুর এক্সপেরিমেন্ট করা উচিত, কিন্তু এই গবেষণাপত্রটি একটা গাণিতিক বা বায়েসিয়ান মডেল ব্যবহার করে প্রমাণ করেছে যে এক্সপেরিমেন্টের আড়ালে কিছু অদৃশ্য খরচ বা ক্ষতিকর দিক লুকিয়ে থাকে। মানে সরাসরি বাজারে প্রবেশ করা, যাকে ডিরেক্ট এন্ট্রি বলা হয়, আর এক্সপেরিমেন্ট করে তারপর বাজারে প্রবেশ বা এক্সপেরিমেন্টাল এন্ট্রি, এই দুটোর মধ্যে কোনটি কখন ভালো, পেপারটি মূলত তারই একটা যৌক্তিক রূপরেখা দাঁড় করিয়েছে। এখানে একটু গভীরে যাওয়া প্রয়োজন। বাইসিয়ান গাণিতিক মডেলের কথা বলা হচ্ছে। এই মডেলটি মূলত কাজ করে একটা সরল দর্শনের ওপর, মানে নতুন তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নিজের পুরনো বিশ্বাসকে একটু একটু করে আপডেট করা। ঠিক, একজন উদ্যোক্তা যখন কোনো পণ্য নিয়ে ভাবেন তখন তার একটা প্রাথমিক ধারণা থাকে। এরপর তিনি যখন এক্সপেরিমেন্ট করেন, বাজার থেকে নতুন তথ্য পান, এই নতুন তথ্য আর পুরনো ধারণার মিশ্রণেই তৈরি হয় সিদ্ধান্ত। পেপারটি বলছে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ায় 3টি অদৃশ্য খরচ কাজ করে। প্রথম শর্তটি হল ইনফরমেশন বা তথ্য, মানে সিগন্যালের স্পষ্টতা। আচ্ছা, এই সিগন্যালের স্পষ্টতার বিষয়টা একটু ভেঙে দেখা যাক। ধরা যাক বাজার সম্পর্কে প্রচণ্ড অনিশ্চয়তা রয়েছে, প্রোডাক্ট মানুষ কিনবে কিনা তা কেউ জানে না। তখন তো সাধারণ যুক্তিতে এক্সপেরিমেন্ট করাটাই সবচেয়ে যৌক্তিক মনে হয়, তাই না? সাধারণ যুক্তিতে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু এখানেই লুকিয়ে আছে সবচেয়ে বড় ফাঁদটি। পেপারের ভাষায় যাকে বলা হয়েছে সিগন্যাল আনসার্টেনিটি বা সংকেতের গোলমাল। বাজার থেকে আসার সংকেত যদি অস্পষ্ট বা ভুল হয় তবে সেই এক্সপেরিমেন্ট কোনো কাজেই আসে না। উল্টো একটা ভুল তথ্য উদ্যোক্তার বিশ্বাসকে আরও বিভ্রান্ত করে তোলে। ব্যাপারটা বোধহয় এরকম। ধরা যাক অত্যন্ত যত্ন করে একটা নতুন রেসিপির স্যুপ রান্না করা হলো। এরপর সেটা এমন একজনকে টেস্ট করানো হলো যার প্রচণ্ড সর্দি এবং স্বাদ নেওয়ার কোনো ক্ষমতাই নেই। হ্যাঁ, সর্দির কারণে তার কাছে তো সব খাবারের স্বাদই এক মনে হবে। ঠিক, হয়তো সে বলে বসলো যে স্যুপটা একেবারেই পানসে। এখন তার এই অস্পষ্ট ফিডব্যাকের ওপর ভিত্তি করে যদি রান্নায় মুঠো মুঠো লবণ বা ঝাল যোগ করা হয় তবে সেটা চূড়ান্ত বোকামি হবে। ঠিক তেমনি ভুল গ্রাহকের কাছ থেকে পাওয়া সিগন্যাল পুরো ব্যবসাকে খাদের কিনারে ঠেলে দিতে পারে। পটি মিলে যায়। তারা জানতেন ব্রাউজারের সীমাবদ্ধতার কারণে গ্রাহকদের ফিডব্যাকগুলো হবে ঠিক ওই সর্দি লাগা মানুষের স্বাদ নেওয়ার মতোই বিভ্রান্তিকর। তাই তারা সিগন্যাল পরিষ্কার হওয়ার জন্য নীরবে অপেক্ষা করেছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন এখানে চলে আসে। ধরুন এক্সপেরিমেন্ট করা হলো এবং সিগন্যাল একেবারে পরিষ্কার পাওয়া গেল। গ্রাহকরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল যে তারা প্রোডাক্টে কি পরিবর্তন চায়। তখন তো আর এক্সপেরিমেন্ট করতে বাধা থাকার কথা নয়। বাধা তখনও থাকতে পারে। আর এখানেই চলে আসে পেপারের দ্বিতীয় শর্তটি মানিয়ে নেওয়ার খরচ বা কস্ট অফ অ্যাডাপ্টেশন। বাজার থেকে পরিষ্কার ফিডব্যাক পাওয়ার পর সেই অনুযায়ী নিজের প্রোডাক্ট পরিবর্তন করার সামর্থ্য উদ্যোক্তার থাকতে হবে। ক্রুজ অটোমেশনের উদাহরণটি এই ক্ষেত্রে খুব সুন্দর একটা অন্তর্দৃষ্টি দেয়। ক্রুজ অটোমেশনের শুরুর দিকের গল্পটা তো বেশ অন্যরকম ছিল। তারা তো শুরুতেই রাস্তায় রোবট গাড়ি নামিয়ে দেয়নি, তাই না? একদমই না। তারা হিসাব করে দেখল স্বয়ংক্রিয় হার্ডওয়্যারে যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে তবে সেই পুরো হার্ডওয়্যার পরিবর্তন করার খরচ হবে আকাশ ছোঁয়া, যা তাদের পুরো তহবিল শেষ করে দিতে পারে। ও আচ্ছা, মানে ঝুঁকিটা অনেক বেশি ছিল। হ্যাঁ, তাই তারা চরম চতুরতার আশ্রয় নিয়েছিল।
শুরুতে পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় গাড়ির বদলে মানুষের সাহায্যে চলে এমন একটা আংশিক সিস্টেম পরীক্ষা করেছিল। এই ধাপে পরিবর্তনের খরচ ছিল অনেক কম, অর্থাৎ ফিডব্যাক পেয়েও যদি প্রোডাক্ট বদলানোর সামর্থ্য না থাকে তবে এক্সপেরিমেন্ট করাটা অর্থের অপচয়। এই আলোচনার সূত্র ধরে মনে একটা ভাবনার উদয় হচ্ছে। হার্ডওয়্যার পরিবর্তনের খরচ অনেক বেশি, এটা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তাহলে তো মনে হচ্ছে সফটওয়্যার বা আইটি কোম্পানিগুলোর জন্য ব্যাপারটা খুব সহজ। তারা তো খুব সহজেই কয়েক লাইন কোড বদলে পরিবর্তন আনতে পারে। তাহলে আইটি কোম্পানিগুলোর কি সবসময় এক্সপেরিমেন্ট করা উচিত? অত্যন্ত চমৎকার একটা যৌক্তিক প্রশ্ন। আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হয়, কিন্তু ঠিক এই জায়গাটাতেই আসে তৃতীয় এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ধাক্কাটি, যাকে পেপারের ভাষায় বলা হয়েছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটেবিলিটি বা সত্য রক্ষার ক্ষমতা। কেউ একজন একটা দারুণ সফটওয়্যার আইডিয়া নিয়ে বাজারে টেস্ট করতে গেল, আর তার সেই এক্সপেরিমেন্ট দেখে বড় কোনো টেক জায়েন্ট আইডিয়াটা চুরি করে ফেলল। তার মানে নিজের প্রোডাক্ট সুরক্ষিত রাখার আইনি বা কৌশলগত জোর না থাকলে এক্সপেরিমেন্ট করা মানে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনা। ঠিক তাই। বড় কোম্পানিগুলোর কাছে টাকা, জনবল সবই থাকে। তারা সহজেই আইডিয়া কপি করে বাজার দখল করে নিতে পারে। মডেলটি খুব পরিষ্কারভাবে দেখাচ্ছে যে আইডিয়া রক্ষা করার মতো শক্ত বাধা না থাকলে এক্সপেরিমেন্ট করার নামে বাজারে আইডিয়া প্রকাশ করাটা বোকামি। সেক্ষেত্রে গোপনে প্রোডাক্ট তৈরি করে একদম শেষ পর্যায়ে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ। আলোচনাটি সত্যি ভাবনার মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে। লিন স্টার্টআপের দ্রুত বাজারে যাও মন্ত্রটি যে সব পরিস্থিতিতে একইভাবে কাজ করে না, তা এই 3 শর্ত থেকে খুব স্পষ্ট। তবে গবেষণাপত্রটি এই বাজার মেকানিজমগুলোর বাইরে গিয়েও আর একটা গভীর মনস্তাত্ত্বিক দিকের অবতারণা করেছে, ফাউন্ডার বায়াস বা প্রতিষ্ঠাতাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস। হ্যাঁ, বায়েসিয়ান মডেলের অন্যতম সৌন্দর্যই হলো এটি। এটা শুধু বাজারের শুষ্ক ডেটা নিয়ে কাজ করে না, মানুষের পূর্বানুমান বা প্রায়র বিলিফসকে গাণিতিকভাবে মডেলে যুক্ত করতে পারে। একজন উদ্যোক্তার মনে বাজার নিয়ে একটা বিশ্বাস থাকে, যেটাকে ওভার কনফিডেন্স বা অতি আত্মবিশ্বাস বলা যায়। তাহলে কি এক্সপেরিমেন্ট করাটা এই অতি আত্মবিশ্বাসের ফাঁদ থেকে বেরোনোর একটা উপায়? একদম সঠিক। মডেলটি দেখাচ্ছে যে উদ্যোক্তার এই প্রাথমিক ধারণার বায়াস যত বড় হবে, এক্সপেরিমেন্ট করাটা তার জন্য তত বেশি জরুরি হয়ে পড়বে। কারণ বাস্তবের সাথে তার কল্পনার যে বিশাল ফারাক, সেটি একমাত্র এক্সপেরিমেন্ট থেকে পাওয়া ডেটাই নির্মমভাবে ভেঙে দিতে পারে। কিন্তু এই ফারাক ভাঙার প্রক্রিয়াটা কি বাস্তবে এত সহজ? একটা প্রোডাক্টের তো অনেকগুলো দিক থাকতে পারে, যাকে পেপারে বলা হয়েছে বহুমাত্রিক পণ্য বা মাল্টিডাইমেনশনাল সেটিং। ডোরড্যাশের মতো ফুড ডেলিভারি অ্যাপের কথাই ধরা যাক। ডোরড্যাশের উদাহরণটি এই বহুমাত্রিক বাজারের ধারণাটি বোঝার জন্য একদম নিখুঁত। ডোরড্যাশের মতো প্ল্যাটফর্মকে একই সাথে 3টি আলাদা মাত্রায় এক্সপেরিমেন্ট করতে হয়েছিল। প্রথমত রেস্তোরাঁ, দ্বিতীয়ত ড্রাইভার এবং তৃতীয়ত সাধারণ গ্রাহক। আচ্ছা, মানে 3 দিকটাই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল? ঠিক। একটি বহুমাত্রিক বাজারে কেবল একটি ফিচারের উপর এক্সপেরিমেন্ট করাটা কখনোই যথেষ্ট নয়। শুভ গ্রাহকদের উপর এক্সপেরিমেন্ট করে যদি তারা দেখে যে প্রচুর চাহিদা আছে, কিন্তু ড্রাইভারদের উপর এক্সপেরিমেন্ট না করে, তাহলে তো পুরো সিস্টেমটি অকার্যকর হয়ে পড়বে। বিষয়টা খুবই যৌক্তিক, কিন্তু এখানে একটা সংকটও দেখতে পাচ্ছি। সব ফিচারের বা সব মাত্রার এক্সপেরিমেন্ট করা তো বাস্তব দুনিয়ায় অনেক সময় সম্ভব হয় না। অর্থ, সময় বা আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে হয়তো কোনো একটা বিশেষ মাত্রার এক্সপেরিমেন্ট করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তখন এই বায়েসিয়ান মডেল কি সমাধান দেয়? ঠিক এই জায়গাতেই পেপারটি একটা চমকপ্রদ তাত্ত্বিক সমাধানের কথা তুলে ধরেছে, যাকে বলা যায় সম্পর্কযুক্ত মাত্রা বা কোরিলেটেড ডাইমেনশনস। মডেল অনুযায়ী যদি একটা ফিচারের এক্সপেরিমেন্ট করা খুব কঠিন হয়, তবে হাল ছেড়ে দেওয়ার কিছু নেই। তার সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্য একটা সহজ ফিচারের এক্সপেরিমেন্ট করলেই আসল উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে। বিষয়টা কি এরকম যে সরাসরি মূল টার্গেটে আঘাত না করে এমন কোথাও আঘাত করা যার কম্পন মূল টার্গেটেও পৌঁছায়? অসাধারণ একটা উপমা। বিষয়টি একদম এমনই। যেমন ধরুন, বায়োটেক কোম্পানিগুলোর কথা ভাবা যাক। লয়েল বা লেয়া ল্যাবসের মতো কোম্পানিগুলো মানুষের আয়ু বাড়ানোর ওষুধ নিয়ে কাজ করে। মানুষের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করাটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং আইনিভাবে প্রবল জটিল।
তাই তারা মানুষের বদলে পশুদের ওপর পরীক্ষা চালিয়েছিল, তাই তো? একদম তাই। পশুদের শরীরবিদ্যা অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এটা তুলনামূলক অনেক সস্তা, আইনি বাধা কম, কিন্তু বায়েসিয়ান মডেলে এটি অত্যন্ত মূল্যবান সিগন্যাল প্রদান করে, যা দিয়ে মানুষের উপর ওষুধের প্রভাব অনুমান করা যায়। কিন্তু এই যে এতগুলো হিসাব নিকাশ, সিগন্যালের স্পষ্টতা, মানিয়ে নেওয়ার খরচ, আইডিয়া চুরির ভয়, একজন সাধারণ উদ্যোক্তা কি প্রতিদিন তার অফিসে বসে এই জটিল বাইসিয়ান সমীকরণ খাতা কলমে মেলাবেন? পেপারটিতে রিটার্ন টু এক্সপেরিমেন্টেশন বা RTE নামে একটা ধারণার কথা বলা হয়েছে। এটা কি এমন কোনো মাপকাঠি যা দেখে উদ্যোক্তারা সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন? ঠিক ধরেছেন। RTE হলো মূলত একটা তাত্ত্বিক কম্পাস। এটি একটা সমীকরণের মাধ্যমে বোঝায় যে এক্সপেরিমেন্ট থেকে যে তথ্যটি পাওয়া যাবে তার মূল্য কি, ওই এক্সপেরিমেন্টটি করতে যে খরচ বা ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে তার চেয়ে বেশি। মানে লাভ ক্ষতির একটা পরিষ্কার হিসাব। হ্যাঁ, বন্য একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে খরচ হলো 10 লাখ টাকা, কিন্তু যে তথ্যটা পাওয়া গেল তা প্রোডাক্টের একটা বড় ভুল শোধরে দিয়ে ভবিষ্যৎ ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে দিল 50 লাখ টাকা। এখানে রিটার্ন পজিটিভ। RTE টুলটি সাধারণ উদ্যোক্তাদের এই হিসাবটি মাথায় রাখতে শেখায়। অত্যন্ত গভীর এবং অন্তর্দৃষ্টিমূলক একটা আলোচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে যদি পুরো বিষয়টিকে একটু সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সাজানো যায়, তবে একাডেমিক জগতের গবেষক এবং মাঠ পর্যায়ের প্র্যাকটিশনারদের জন্য বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা বেরিয়ে আসে। প্রথমেই প্র্যাকটিশনার বা উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে বলতে হয়, লিন স্টার্টআপ পদ্ধতি অন্ধভাবে অনুসরণ করা উচিত নয়। বাজারে নামার আগে দেখতে হবে সিগনাল বোঝার ক্ষমতা আছে কিনা, আইডিয়া চুরি হওয়ার ভয় আছে কিনা এবং পরিবর্তনের আর্থিক সামর্থ্য আছে কিনা। আর যারা গবেষণার সাথে যুক্ত সেই একাডেমিকদের জন্য এই পেপারটি বায়েসিয়ান এন্টারপ্রেনিয়রশিপ এবং থিওরি বেসড ভিউতে একটা বিশাল অবদান রেখেছে। এটি প্রমাণ করে যে উদ্যোক্তার কাছে শুধু একটা ভালো থিওরি থাকলেই হবে না, বাজার থেকে পাওয়া ফিডব্যাক নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করার গাণিতিক দক্ষতাও থাকতে হবে। ঠিক তাই। এবং এখান থেকে ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম হয়, যা হয়তো আগামী দিনের গবেষকদের নতুনভাবে ভাবাতে বাধ্য করবে। সেই ভাবনার খোরাক দিয়েই আজকের এই আয়োজনের ইতি টানা যাক। এই পুরো বায়েসিয়ান মডেলে একটা বিষয় ধরে নেওয়া হয়েছে যে উদ্যোক্তারা ঝুঁকি নিতে ভয় পান না, মানে তারা রিস্ক নিউট্রাল। কিন্তু বাস্তব দুনিয়ায় যদি দেখা যায় কোনো একজন উদ্যোক্তা চরমভাবে ঝুঁকি এড়াতে চান বা রিস্ক অ্যাভার্স, তখন এই সমীকরণ কিভাবে কাজ করবে? খুব প্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন। অথবা এক্সপেরিমেন্ট করা বা না করা এই বাইনারি সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে যদি ভাবা হয় যে ঠিক কতটুকু এক্সপেরিমেন্ট করা উচিত, এমন কোনো কন্টিনিউয়াস মডেল তৈরি করা হলে কি তাত্ত্বিক জগতে নতুন কোনো দিগন্ত খুলে যাবে? ফিগমার সেই 4 বছর লুকিয়ে থাকার গল্পে ফিরে গেলে একটা বিষয় খুব সুন্দরভাবে প্রতীয়মান হয়। গোপনীয়তায় থাকা মানেই ভয়ের কাছে হার মানা নয়। একদম, বরং এটি ছিল সঠিক সংকেতের জন্য এক গভীর প্রশান্ত অপেক্ষা। ঠিক, কখনো কখনো তড়িঘড়ি করে এক্সপেরিমেন্ট না করাটাই হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে সফল এক্সপেরিমেন্ট। এই কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নগুলো এবং অপেক্ষার এই শান্ত দর্শনটি ভাবনার জগতে রেখে আজকের এই মগ্ন বিশ্লেষণ এখানেই শেষ করা হচ্ছে। নিরাপদ এবং চিন্তাশীল থাকুন। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। बात साल 2010 की है। स्ट्राइप नाम की एक नई कंपनी, जो कि आज हम सब जानते हैं, उनके संस्थापकों ने कुछ ऐसा किया जो आमतौर पर तकनीक की दुनिया में लोग करते नहीं हैं। कॉलेजन ब्रदर्स। हाँ, पैट्रिक और जॉन कॉलेजन। वो स्टार्टअप इवेंट्स में जाते और अगर किसी को उनके ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में जरा सी भी दिलचस्पी होती तो वो उन्हें कोई चमकदार प्रेजेंटेशन नहीं दिखाते थे। वो सीधे कहते अपना लैपटॉप दो। बिल्कुल, वही खड़े खड़े तुरंत उस व्यक्ति का पेमेंट सिस्टम सेट कर देते। सिलिकॉन वैली में तो इसे बाकायदा कॉलेजन इंस्टॉलेशन ही कहा जाने लगा था। मजेदार बात यह है कि उन्हें बाजार में उतरने से पहले किसी बड़े प्रयोग, मेरा मतलब है बीटा टेस्टिंग वगैरह की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। हाँ, क्योंकि वो खुद डेवलपर थे ना, उन्हें पता था कि बाजार को एक आसान पेमेंट गेटवे की कितनी सख्त जरूरत है। सही बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और कंपनी थी एमकोपा। इनका लक्ष्य अफ्रीका में मिट्टी के तेल के लैंप हटाकर पे एज यू गो सौर जलाना था। लेकिन उन्होंने स्ट्राइप की तरह सीधे अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। उन्होंने तो बहुत सारे परीक्षण किए थे। हाँ, केन्या में कई अलग अलग परीक्षण किए, तकनीक परखी, माइक्रो पेमेंट मॉडल टेस्ट किया, लोगों की भुगतान करने की क्षमता का अध्ययन किया
और तब जाकर पूरी तरह से बाजार में उतरे। मतलब एक ही उद्यमशीलता की दुनिया, लेकिन दो बिल्कुल अलग रास्ते। और ये एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है। ये उस बुनियादी सवाल को सामने लाता है जिसका सामना हर उद्यमी करता है। सालों से हमें यही रटाया गया है कि भाई हर नए व्यवसाय के लिए एक ही तय फॉर्मूला है कि कच्चा प्रोडक्ट बनाओ और बाजार में उतार कर टेस्ट करो। लेकिन एमकोपा और स्ट्राइप दोनों ही अरबों डॉलर की कंपनियां बनी, जबकि उनके शुरुआती कदम एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। बिल्कुल, और यही हमारी आज की इस विस्तृत एकेडमिक चर्चा का केंद्र है। हम जिस शोध पत्र पर बात करने वाले हैं ना, वो इस आम धारणा की जड़ों को हिला देता है। हाँ, और ये कोई ऐसा वैसा लेख नहीं है, ये बेहद प्रतिष्ठित स्ट्रैटेजिक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जो कि एक FT50 सूचीबद्ध जर्नल है। इस शोध पत्र का शीर्षक है Toward a Theory of Bayesian Experimentation in Early Stage Ventures, और इसे ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एंड्रिया कोंतिजियानी, तिलबर्ग यूनिवर्सिटी की लीन डेनू और लीडन यूनिवर्सिटी के मार्टन हैब्लिसेक ने लिखा है। और ये शोध पत्र सिर्फ सतही बात नहीं करता, ये बहुत गहराई से गणितीय आधार पर ये विश्लेषण करता है कि किसी भी नए स्टार्टअप के लिए प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट करना कब एक मास्टर स्ट्रोक होता है और कब ये एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले कि हम इन अकादमिक सिद्धांतों को रोजमर्रा के उदाहरणों से समझें, हमारे नियमित सुनने वालों और अकादमिक समुदाय के लिए कुछ अहम बातें हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मार्च 2026 से हमारी ये चर्चा अब एक साप्ताहिक कार्यक्रम बन गई है। हाँ, हर रविवार और सोमवार। एकदम सही। रविवार को हम क्लासिक पेपर या किताब की समीक्षा करते हैं और सोमवार का अंक शीर्ष स्तरीय पीयर रिव्यूड जर्नल्स के ताजा प्रकाशनों पर होता है। हमारे वफादार श्रोताओं के समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। और इसके पीछे एक बहुत ही जरूरी कारण भी है। मतलब आज के समय में AI की मदद से बनने वाले जो ये डिजिटल पॉडकास्ट है ना, हाँ, वो प्रकृति पर काफी भारी पड़ते हैं। हाँ, पानी की बहुत खपत होती है। बिल्कुल। AI को चलाने वाले बैकएंड डेटा सेंटर्स के सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए बहुत पानी लगता है। तो सप्ताह में केवल 2 अंक जारी करना, ये जलवायु परिवर्तन की दिशा में हमारा अपना एक छोटा सा योगदान है। इससे हम प्रकृति पर दबाव कम करते हैं और सामग्री की गुणवत्ता भी बनी रहती है। गुणवत्ता की बात करें तो हम 2026 की FT50 सूची में हाल ही में हुए बदलावों से भी पूरी तरह अवगत हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है कि जो जर्नल्स इस सूची से बाहर हुए हैं वो आज भी बेहद प्रतिष्ठित हैं। नए शोधकर्ताओं की सुविधा के लिए हम अपनी चर्चाओं में उन्हें एमेरिटस FT सूचीबद्ध जर्नल कहेंगे। और ये बात बताते हुए थोड़ा भारी मन भी हो रहा है कि MIT स्लोन मैनेजमेंट रिव्यू का प्रकाशन सितंबर 2026 से बंद होने जा रहा है। अरे हाँ, वो बहुत ही ऐतिहासिक जर्नल रहा है। 6 दशकों का योगदान है उनका मैनेजमेंट रिसर्च में। लेकिन इसके बंद होने से उनका महत्व कम नहीं होता। हमारी वीकेंड क्लासिक्स में उनके लेखों पर चर्चा हमेशा की तरह जारी रहेगी। बिल्कुल, हमारे लिए साहित्य का प्रभाव किसी भी इंडेक्स से ऊपर है। तो श्रोताओं से बस यही गुजारिश है कि शानदार पेयर रिव्यू किए गए लेख को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। लिंक शो नोट्स में है। तो अगर हम नए शोधकर्ताओं के लिए इस पेपर का एक बुनियादी सारांश दें, हाँ, बिल्कुल सरल भाषा में, तो वो ये होगा कि ये पेपर इस धारणा को चुनौती देता है कि लॉन्च करने से पहले प्रयोग करना ही चाहिए। ये बताता है कि कब प्रयोग करना डेटा का खजाना लाता है और कब ये सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी है, जिससे आपका आइडिया चोरी भी हो सकता है। मतलब पिछले 2 दशकों से तो लीन स्टार्टअप की विचारधारा ही चल रही है ना दिमाग में। वही तो, MVP बनाओ, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। हाँ, सबसे कच्चा रूप, उसे तुरंत बाजार में उतारो, फीडबैक लो, सीखो और फिर नया रूप लाओ। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ूं तो ये तो ऐसा है जैसे पूरा रेस्टोरेंट खोलने से पहले सड़क किनारे एक छोटा सा स्टॉल लगाकर सिर्फ एक डिश लोगों को चखाना। अच्छा उदाहरण है। अगर स्वाद पसंद आया तो बड़ा रेस्टोरेंट खोल लो। देखने में तो बहुत तार्किक लगता है ये, इसमें नुकसान ही क्या है? ऊपरी तौर पर लगता है कि प्रयोग करना तो हमेशा अच्छा ही है, लेकिन यही वो जगह है जहां ये शोध पत्र गणित से साबित करता है कि ये सोच हमेशा सही नहीं होती। अच्छा। हाँ, लेखक डायरेक्ट एंट्री यानी बिना प्रयोग के सीधे लॉन्च करना और एक्सपेरिमेंटल एंट्री यानी प्रयोग के बाद लॉन्च करना, इनके बीच का अंतर बायसियन नजरिया अपनाकर समझाते हैं। बायसियन नजरिया, इसे थोड़ा सरल करते हैं। बिल्कुल, बायसियन सिद्धांत असल में इस बात का गणित है कि नई जानकारी मिलने पर हम अपनी पुरानी सोच को कैसे बदलते हैं। मान लीजिए बाजार को लेकर आपकी एक शुरुआती धारणा है, इसे प्रायर बिलीफ कहते हैं।
जब आप प्रयोग करते हैं तो नया डेटा मिलता है और उस नए सबूत के आधार पर आप अपनी धारणा को अपडेट करते हैं। अच्छा, जैसे अगर मुझे लगता है कि आज बारिश नहीं होगी, ये मेरी शुरुआती धारणा है। हाँ। लेकिन मैं प्रयोग के तौर पर खिड़की खोलकर बाहर देखता हूँ और काले बादल दिखाई देते हैं, तो मैं अपनी धारणा अपडेट करके छाता ले लेता हूँ। बिल्कुल सटीक। अब इसे स्ट्राइप वाले मामले में लगाकर देखिए। उनके संस्थापकों को ऑनलाइन पेमेंट की दिक्कतों का पहले से ही इतना सटीक अंदाजा था कि उन्हें बाहर खिड़की से देखने की जरूरत ही नहीं थी। अरे वाह! उनके लिए बाजार की अनिश्चितता लगभग शून्य थी। तो मतलब जब जवाब पहले से ही पता है तो सवाल पूछने के लिए पैसे और समय क्यों बर्बाद करना? ठीक यही बात है। अगर स्ट्राइप वाले प्रयोग करने में 6 महीने बिता देते तो वो सिर्फ उसी चीज की पुष्टि कर रहे होते जो उन्हें पहले से मालूम थी। तो पेपर का पहला निष्कर्ष यही है, जब आपको बाजार का गहरा ज्ञान हो तो प्रयोग का खर्च उठाना बेमानी है। ये तो बात हुई जब आसमान बिल्कुल साफ हो। लेकिन मान लीजिए भारी अनिश्चितता है, हमें वाकई नहीं पता कि बाजार को क्या चाहिए। हम एक कच्चा प्रोडक्ट बनाकर बाजार का मिजाज समझते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि हमें जो दिख रहा है वो सच है? मतलब क्या ग्राहकों का फीडबैक हमेशा सही रास्ता दिखाता है? और यहीं से शोधकर्ता सिग्नल अनिश्चितता या सिग्नल अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। ये क्या होता है? जब आप शुरुआती प्रोडक्ट बाजार में उतारते हैं तो ग्राहक जो भी प्रतिक्रिया देते हैं वो आपके लिए एक सिग्नल है, लेकिन वो सिग्नल हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कई बार उसमें बहुत शोर यानी नॉइज होता है जो आपको गुमराह कर सकता है। मैं इसे एक एनालॉजी से समझता हूँ। ये तो भारी तूफान में रेडियो ट्यून करने जैसा है ना? हाँ। आप रेडियो का डायल घुमा रहे हैं, संगीत सुनना है, लेकिन तूफान के कारण इतनी गड़गड़ाहट है कि समझ ही नहीं आ रहा कौन सा गाना बज रहा है। आप उस शोर के आधार पर यह तो तय नहीं कर सकते कि रेडियो खराब है या स्टेशन बंद है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। बाजार का शोर भी ऐसा ही होता है। इसका बेहतरीन वास्तविक उदाहरण फिग्मा का है। आज डिजाइन की दुनिया का इतना बड़ा नाम है, लेकिन जब वो बन रहा था तो उन्होंने लीन स्टार्टअप वाली जल्दी लॉन्च करने की सलाह को बिल्कुल किनारे कर दिया था। उन्होंने बीटा वर्जन लाने से पहले करीब 4 साल तक स्टेल्थ मोड में यानी पूरी तरह छिपकर काम किया। रुको, 4 साल तक छिपकर काम करना? टेक इंडस्ट्री में तो ये आत्महत्या करने जैसा है। आज जहां तकनीक हर दिन बदल रही है, अगर आप 4 साल कमरे में बैठकर प्रोडक्ट बनाते रहेंगे तो कोई भी आपका आइडिया चुरा लेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो कच्चा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो जो सिग्नल मिलेगा वो पूरी तरह गलत होगा। ऐसा क्यों? उस समय वेब ब्राउजर इतने उन्नत नहीं थे कि वो फिग्मा जैसे भारी डिजाइन टूल को संभाल सकें। WebGL तकनीक नई नई आई थी। अगर वो लॉन्च करते, यूजर्स उसे इस्तेमाल करते, सिस्टम हैंग हो जाता। अच्छा, और लोग कहते कि ये टूल बिल्कुल बेकार है। हाँ, जबकि हकीकत में टूल बेकार नहीं था, ब्राउजर उस टूल के लिए तैयार नहीं थे। तो वो यूजर फीडबैक एक भ्रामक सिग्नल होता, उसी रेडियो के शोर की तरह। बिल्कुल। अगर फिग्मा उस भ्रामक फीडबैक को सुनकर अपना डिजाइन बदल लेता तो वो कभी सफल नहीं हो पाता। इसलिए जब फीडबैक में बहुत ज्यादा शोर हो तो प्रयोग करना आपको भटका सकता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन एक बात और है। कई बार संस्थापकों को लगता है कि उनका आइडिया तो दुनिया बदल देगा, लेकिन ग्राहकों को कोई परवाह ही नहीं होती। हाँ, इसे प्रायर बायस कहते हैं। तो इस अंधे प्यार का क्या इलाज है? यहाँ प्रयोग सबसे ज्यादा मूल्यवान बन जाता है। जब संस्थापकों की अपनी सोच असली बाजार की जरूरत से बहुत दूर हो तो भले ही फीडबैक में थोड़ा शोर हो, वो आपके लिए वरदान है। मतलब ये प्रयोग आपके अंधे विश्वास को तोड़ने का काम करता है? एकदम सही। ये आपको वास्तविकता के धरातल पर ले आता है। अच्छा, मान लेते हैं कि तूफान शांत हो गया है, रेडियो पर गाना एकदम साफ है, ग्राहकों ने स्पष्ट कह दिया कि भाई हमें प्रोडक्ट का रंग लाल नहीं नीला चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ फीडबैक मिल जाना ही काफी है? क्या कंपनी उसे रातों रात लागू कर सकती है? और यही कई स्टार्टअप्स दम तोड़ देते हैं। इसे शोधकर्ताओं ने कॉस्ट ऑफ अडेप्टेशन या बदलाव की लागत कहा है। सिग्नल मिलना एक बात है, लेकिन उसके आधार पर प्रोडक्ट को पूरी तरह बदल देना, इसमें असीम समय, पैसा और ऊर्जा लगती है। इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण है कि पता तो चल गया क्या करना है लेकिन कर नहीं पाए? क्रूज ऑटोमेशन का सफर देखिए। शुरुआत में वो पूरी तरह से स्वचालित कार नहीं बना रहे थे। तो क्या था उनका प्रोडक्ट? वो एक ऐसा छोटा किट बना रहे थे जिसे लोग अपनी मौजूदा कार की छत पर लगा लें, जिससे कार सिर्फ हाईवे पर खुद चल सके।
लेकिन जब परीक्षण किया तो स्पष्ट सिग्नल मिला कि ग्राहकों को सिर्फ हाईवे वाला किट नहीं चाहिए, उन्हें पूरी तरह स्वचालित प्रणाली चाहिए थी। हाँ, जो शहर की भीड़-भाड़ में भी चले। तो परेशानी क्या थी? सॉफ्टवेयर के कोड में कुछ बदलाव करते, कैमरे जोड़ते और नया वर्जन लॉन्च कर देते। काश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दुनिया इतनी आसान होती। उनका पूरा आर्किटेक्चर इतने सीमित इस्तेमाल के लिए बुना गया था कि वो उसमें पैचवर्क नहीं कर सकते थे। ओह, उन्हें वो पूरा प्रोजेक्ट ही रद्द करना पड़ा, शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। 18 महीने से ज्यादा का समय लग गया। ये तो वैसा ही हुआ कि मैंने कार की टेस्ट ड्राइव की, मुझे लगा इसका इंजन कमजोर है। अब मैं सिर्फ इंजन बदल कर काम नहीं चला सकता, क्योंकि नई ताकतवर मशीन के लिए कार का चेसीज और ब्रेक भी बदलने पड़ेंगे। बिल्कुल, मुझे तो पूरी कार ही कबाड़ में डालकर नई खरीदनी पड़ेगी। हाँ, और अगर बदलाव की लागत इतनी ज्यादा है कि फीडबैक के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो शुरुआती प्रयोग सिर्फ एक बहुत महंगी गलती है। और इसके साथ एक डर भी तो जुड़ा है। जब आधी अधूरी कार बाजार में लाते हैं तो बड़ी कंपनियां भी तो देख रही होती हैं। सही कहा, इसे एप्रोप्रिएबिलिटी यानी नकल होने का जोखिम कहते हैं। जब आप MVP लाते हैं तो आप दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे होते हैं कि आप क्या बना रहे हैं। तो अगर मेरे पास कोई पेटेंट नहीं है तो बड़ी कंपनियां जिनके पास करोड़ों का बजट है, वो तो मेरा आइडिया चुरा कर मुझसे बेहतर बना लेंगे। बिल्कुल बना सकती हैं। तो क्या इसका मतलब है कि डर के मारे अपना आइडिया छिपा लेना चाहिए? क्या ये उद्यमशीलता में कायरता नहीं है? इसे कायरते नहीं, रणनीतिक खामोशी कहते हैं। रणनीतिक खामोशी? हाँ, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जहां नकल करना आसान है, वहां पहले ही पत्ते खोल देना बेवकूफ़ी है। सर्ज AI को देखिए, डेटा लेबलिंग की दुनिया में कदम रखा, बिना किसी PR टीम के, बिना शोर शराबे के। वो तब तक लाइमलाइट से दूर रहे जब तक उनका रेवेन्यू $1 बिलियन तक नहीं पहुंच गया। उन्होंने जानबूझकर प्रयोग को सार्वजनिक नहीं किया। कमाल है, प्रयोग सिर्फ विज्ञान नहीं, एक शतरंज का खेल भी है। तो बाजार की अनिश्चितता, सिग्नल का शोर, बदलाव की लागत और नकल का डर, ये सब तय करते हैं कि प्रयोग करें या नहीं। बिल्कुल। लेकिन मुझे पेपर का एक हिस्सा बहुत पेचीदा लगा। अब तक हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे प्रोडक्ट सिर्फ एक सिंगल चीज है, पर असल जिंदगी में ऐसा थोड़ी होता है। आप बहुआयामी बाजार यानी मल्टी डायमेंशनल मार्केट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, जहां प्रोडक्ट में कई खूबियां होती हैं। तो उद्यमी ये कैसे तय करें कि किस हिस्से का टेस्ट करें? DoorDash का उदाहरण लेते हैं। वो सिर्फ एक साधारण ऐप नहीं बना रहे थे, वो एक 3 साइडेड मार्केट प्लेस बना रहे थे। 3 अलग अलग आयाम। हाँ, पहला, क्या भूखे ग्राहक डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा पैसे देंगे? दूसरा, क्या रेस्टोरेंट खाना अलग से पैक करने का सिरदर्द लेंगे? और तीसरा, क्या उन्हें सही समय पर खाना पहुंचाने वाले ड्राइवर मिलेंगे? अगर एक भी आयाम फेल तो पूरी कंपनी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। तो क्या हर एक का अलग अलग परीक्षण करना चाहिए? क्या हम जरूरत से ज्यादा प्रयोग यानी ओवर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं? बहुत ही शानदार सवाल है और जवाब है हाँ, जरूरत से ज्यादा प्रयोग करना भी समय की बर्बादी है। शोधकर्ता बताते हैं कि जब 2 आयाम आपस में बहुत गहराई से जुड़े हों, यानी उनका कोरिलेशन बहुत ज्यादा हो, तो दोनों का अलग अलग परीक्षण जरूरी नहीं है। अच्छा, किसी ने ऐसा किया है? एमकोपा ने यही किया। उनके सौर ऊर्जा प्रोडक्ट और माइक्रो पेमेंट सेल्स प्रोसेस के बीच गहरा संबंध था। वो ये टेस्ट नहीं कर रहे थे कि लोगों को सौर ऊर्जा चाहिए या नहीं। तो वो क्या टेस्ट कर रहे थे? वो ये देख रहे थे कि क्या लोग इसके लिए रोजाना छोटे छोटे भुगतान कर सकते हैं। दोनों का अलग अलग टेस्ट बेमानी था, क्योंकि एक की सफलता दूसरे पर निर्भर थी। अच्छा, एक उलझन है मुझे यहाँ। मान लीजिए 2 आयाम जुड़े हैं, लेकिन एक का परीक्षण बहुत महंगा या असंभव है, तो क्या हम दूसरे का टेस्ट करके पहले वाले का पता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। मैंने लॉयल और ले लैब्स के बारे में पढ़ा था। इंसानों की उम्र बढ़ाने की दवाई बनानी थी और उन्होंने कुत्तों पर प्रयोग किया। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। एक कुत्ता ये थोड़ी बताएगा कि उसे दवाई खाकर कैसा महसूस हो रहा है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ठोस है। इंसानों पर प्रयोग करने का मतलब था कड़े FDA नियम, सालों का इंतजार और करोड़ों का खर्च। तो कुत्तों को क्यों चुना, चूहों को क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ कोरिलेशन मजबूत है। कुत्ते उसी पर्यावरण में रहते हैं जहाँ हम रहते हैं, वही हवा सांस लेते हैं, बीमारियां भी लगभग समान होती हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका जीवन काल इंसानों से छोटा होता है, तो दवा का असर 7 गुना तेजी से दिखता है। इंसानों और कुत्तों में इतनी समानता है कि कुत्तों पर किए प्रयोग से उन्हें एक प्रॉक्सी सिग्नल मिल गया। मतलब उन्होंने उस आयाम पर प्रयोग किया जहां से डेटा पाना सस्ता और नियमों के झंझट से मुक्त था। बिल्कुल, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। सच में
सीधे दीवार से सिर टकराने की बजाय बगल वाले कमजोर दरवाजे से रास्ता खोजना। खैर, अगर हम इन सभी जटिल बातों को समेटें तो आज के संस्थापकों के लिए मुख्य निष्कर्ष क्या है? पेपर का सार है रिटर्न टू एक्सपेरिमेंटेशन या RTA का सिद्धांत। इसे तराजू की तरह सोचें। एक पलड़े में है प्रयोग से मिलने वाली नई जानकारी का मूल्य और दूसरे पलड़े में है उसे करने की लागत, बदलाव का खर्च, शोर का जोखिम और नकल का डर। सबक यह है कि प्रयोग करना कोई डिफॉल्ट नियम नहीं है। निवेशकों को हर स्टार्टअप पर प्रयोग करने का दबाव नहीं डालना चाहिए। और मुझे लगता है इस शोध ने भविष्य के लिए भी कई नए रास्ते खोले हैं। मतलब आगे और क्या अध्ययन हो सकता है इस पर? बहुत कुछ, जैसे संस्थापकों के मनोविज्ञान का क्या असर होता है। अगर कोई जोखिम लेने से बहुत ज्यादा डरता है तो उसका प्रयोग का तरीका कैसे बदलेगा? सही बात है। या जब कोई स्टार्टअप सिर्फ एक ऐप नहीं, पूरी इंडस्ट्री ही बदलने का प्रयोग कर रहा हो, प्रतिस्पर्धा के बीच गेम थ्योरी का क्या गणित होगा? इन सवालों पर भविष्य में बहुत काम हो सकता है। ये वाकई में दिमाग के दरवाजे खोलने वाला विश्लेषण था। हमेशा टेस्ट करो कि सलाह कैसे कई बार बहुत बुरी साबित हो सकती है, ये हमने आज देखा। अच्छा, आज की चर्चा समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक थोड़ा भविष्यवादी विषय छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल। आज के दौर में AI इतनी तेजी से विकसित हो रहा है कि वो रातों रात पूरा सॉफ्टवेयर कोड फिर से लिख सकता है। तो अगर भविष्य में AI की वजह से बदलाव की कीमत सचमुच शून्य हो जाती है, मतलब कोड बदलने में कोई लागत ही ना लगे, तो क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में हर कंपनी हमेशा सिर्फ प्रयोग ही करती रहेगी? कि कंपनियां सिर्फ एक आकारहीन ढांचा होंगी जो हर सुबह ग्राहकों के मूड के हिसाब से रूप बदल लेंगी? बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा और थोड़ा डरावना विचार है। अगर बदलाव की कीमत ही नहीं रहेगी तो ब्रांड की पहचान और स्थिरता का क्या होगा? वही तो, ये तकनीक और अर्थशास्त्र के चौराहे पर खड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है और आज के उद्यमशीलता जगत के लिए मनन करने का शानदार विषय है। जैसे स्ट्राइप और एमकोपा की राहें अलग थीं, वैसी हर आइडिया की राह उसकी जमीनी हकीकत के अनुसार तय होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। आज की इस बेहद शांत और सुकून भरी अकादमिक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य पढ़ते रहें, नए सवाल उठाते रहें और स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते रहें। सुनने और समर्थन देने के लिए दिल से शुक्रिया। Forestil dig, at du sidder på en fuldstændig revolutionerende idé. Du har set et hold i markedet, noget som ingen andre har løst endnu, og du ved, at potentialet er enormt. Hvis du lytter til den moderne iværksætterlitteratur, så er instruksen ret klar. Ja, den klassiske opskrift. Lige præcis. Byg en hurtig, ufærdig prototype, en såkaldt MVP, og kast den ud til kunderne med det samme. Fejl hurtigt, lær hurtigt. Rigtigt. Men forestil dig nu, at du bevidst vælger at ignorere det råd. I stedet for at lancere, låser du døren, ruller gardinerne ned og bygger i dybeste hemmelighed i næsten 4 år. Det er jo et mareridt for en klassisk Lien-investor. Fuldstændig, men det er jo præcis, hvad grundlæggerne af designplatformen Figma gjorde. De arbejdede i absolut stilhed. Wow. 4 år? 4 år. Og grunden var simpel, men på en måde ret overset i hele det her lean startup-paradigme. De vidste, at hvis de lancerede for tidligt, så ville brugerne afvise produktet. Ikke på grund af ideen, antager jeg. Nej, netop ikke fordi selve designvisionen var forkert, men fordi datidens webbrowser simpelthen ikke kunne trække teknologien endnu. Ah, okay. Ja, så de undgik bevidst at indsamle det, man kan kalde et støjende feedback-signal fra markedet. Et signal, der med stor sandsynlighed ville have dræbt deres strøm, før den overhovedet fik vinder. Og den spilling, du beskriver der, altså det svære valg mellem at teste markedet tidligt for at lære noget, eller at bygge i stilhed for at beskytte sin vision, det er faktisk kernen i vores snak i dag. Det er det nemlig, og vi læner os op af en yderst anerkendt fagfællebedømt artikel her. Ja, den er publiceret i Strategic Entrepreneurship Journal, som jo er et prestigefyldt FT50-tidsskrift. Helt sikkert. Hvem er det, der står bag? Det er 3 forskere, Andrea Contigiani fra Fisher College of Business på Ohio State University, Lien Denoo fra Tilburg University og Márton Hablicsek fra Leiden University. Virkelig et stærkt hold. Men før vi dykker helt ned i deres teori, har vi en lille, men ret vigtig opdatering til dig, der lytter med. Lige præcis. Fra og med marts her i 2026 er vi jo overgået til at være en ugenlig udsendelse. Altså vi udkommer hver søndag og mandag nu. Ja, hvor søndagen er reserveret til de klassiske forskningsartikler eller bøger. Nemlig. Og mandagsudgaven fastholder fokus på de absolut bedste fagfællebedømte tidsskrifter.
Vi vil bare sige tusind tak til vores loyale abonnenter. Vi elsker virkelig, at du støtter op om det her initiativ. Det gør vi. Og grunden til, at vi begrænser os til 2 ugentlige udgivelser, det er simpelthen fordi AI-assisterede udsendelser trækker utrolig hårdt på natur og klima. Ja, der er et massivt vandforbrug i de bagvedliggende datacentre. Lige nøjagtigt. Så at begrænse udgivelserne er vores måde at give let tilbage til klimainitiativerne på, uden at vi mister rigdommen i vores faglige samtaler. Det er en vigtig pointe. Og apropos opdateringer, så er der også sket nogle ændringer på FT50-listen over tidsskrifter her i 2026, som vi er fuldt ud bevidst om. Rigtigt. Vi vil gerne understrege over for dig, at de tidsskrifter, der er gledet ud af listen, fortsat er ekstremt prestigefyldte. Vi kommer stadig til at diskutere deres artikler i vores weekendklassiker og regulære mandagsudsendelser. Ja, helt sikkert. Og for at gøre det nemmere for nye forskere at navigere i, så vil vi fremrettet kalde dem Emeritus FT-listede tidsskrifter. Det er en god måde at sige det på. Og vi skal også lige anerkende den formelle udmelding om, at produktionen af det meget anerkendte praktikertidsskrift MIT Sloan Management Review stopper fra september 2026. Ja, det er jo lidt vemodigt. Det er det. Men vi understreger igen, at det overhovedet ikke forringer tidsskriftets enorme bidrag til ledelsesforskningen gennem de sidste 6 årtier. Nej, slet ikke. Vi vil fortsætte med at fremhæve deres artikler i vores weekendklassiker, når det er muligt. Vores faglige fællesskab prioriterer litteraturens gennemslagskraft og kvalitet langt over et eller andet indeks eller liste. Ja, de principper holder vi fast i. Så tak fordi du lytter og støtter os. Og vi vil virkelig opfordre dig til at tage dig tid til at læse den her utrolig gennemtænkte artikel. Linket ligger i show notes. Det bør man unde sig selv. Men altså, hvis vi lige skal skære det ud i pap for dig, der måske er helt ny forsker og lige at starte på din egen forskningsrejse, hvordan kan vi så opsummere det her papir i et helt simpelt sprog? Jo, artiklen stiller egentlig bare et stort, grundlæggende spørgsmålstegn ved det der mantra om, at alle startups altid skal eksperimentere. Ja, at man altid skal teste. Præcis. Forfatterne bruger en bayesiansk matematisk model, hvilket dybest set bare handler om, hvordan man opdaterer sin overbevisning, når man får ny information. Og hvad viser den model så? Den beviser, at det at teste et ufærdigt produkt faktisk har skjulte strategiske omkostninger. Nogle gange er det faktisk bedre at stole på sin oprindelige idé og gå direkte på markedet. Det er jo et ret radikalt brud med det, vi plejer at lære. Ja, det er det virkelig. Hvis vi fletter lidt tilbage til den historie om Figma fra starten. Deres frygt var jo netop at få dårlig feedback. Hvorfor er feedback ikke bare altid en gave? Man hører jo altid, at feedback er guld. Det er her forskellen mellem markedsusikkerhed og signalusikkerhed kommer ind i billedet. Og det er helt centralt. Hvordan definerer de 2 ting? Altså, markedsusikkerhed er, når du reelt ikke ved, om nogen vil købe dit produkt. Tænk på virksomheden Mukhopadhyay. Da de skulle introducere solcellelamper og nye betalingsløsninger i Afrika, var markedsusikkerheden enorm. Ja, der er det jo en helt ny forretningsmodel i en ny kontekst. Lige præcis. I det scenarie er eksperimenter fuldstændig uvurderlige. Du har brug for at vide, om fundamentet overhovedet er der. Men hvad så med signalusikkerhed? Signalusikkerhed er, hvis den feedback, du får fra markedet, er støjende, upræcis eller måske direkte misforstået. Ligesom med Figma og deres browserproblemer. Netop. Hvis signalusikkerheden er høj, så betaler du prisen for at bygge og køre eksperimentet, men du lærer intet. Faktisk kan du blive snydt til at tro, at din idé er dårlig. Det minder mig på en måde lidt om at lede efter en bestemt radiostation. Hvordan tænker du? Jo, altså hvis du ikke kender frekvensen, hvilket svarer til markedsusikkerhed, så giver det super god mening at dreje på knappen for at søge. Rigtigt. Men hvis din antenne er i stykker, og alt hvad du modtager, uanset hvad, er skrat og støj, altså signalusikkerhed, så hjælper det jo ikke noget at dreje på knappen. Du bliver bare mere og mere forvirret. Det er faktisk en virkelig god analogi. Modellen formaliserer lige præcis det her. Og hvis vi ser på et tredje scenarie, så nævner de virksomheden Stripe. Betalingssystemet. Ja. De byggede et betalingssystem, som de i forvejen vidste, der var et desperat behov for blandt udviklere. Så markedsusikkerheden var meget lav. Meget lav. Og derfor var lange, omkostningsfulde eksperimenter unødvendige. Det mest logiske var bare at gå direkte ud på markedet. Okay, så lad os sige, at vi faktisk bygger noget, og vi får et krystalklart signal for vores eksperiment. Antennen virker. Vi ved nu præcis, hvad kunden vil have. Ja. Betyder det så automatisk, at vi bare hurtigt skal ændre vores produkt og rette ind efter det? Nej, og det er her papiret virkelig tager fat. De introducerer 2 store bremseklodser mere. Tilpasning, altså adaptation, og tilegnelse, som de kalder appropriability.
Lad os starte med tilpasning. Hvad dækker det over? Det handler om, hvad det koster at sadle om. Hvad koster det at rette til? De trækker Cruise Automation frem som eksempel. Dem med de selvkørende biler. Ja. De lavede et eksperiment med et system til selvkørende biler, der udelukkende var designet til motorveje. Okay, ret snævert. Lige præcis. Og markedet sagde, det her er for begrænset. Bilerne skal også kunne køre i byen. Signalet var super klart. Så kunden talte tydeligt. Ja, men deres arkitektur var så utrolig fastlåst. De kunne ikke bare lige tilpasse det med en lille opdatering. De var tvunget til at skrotte 18 måneders hårdt ingeniørarbejde. Ej, au! 18 måneder. Men vent lige. Er hele pointen med at være en startup ikke netop, at man skal være agil? Hvis man bygger noget, der ikke kan tilpasses, er man så ikke dødsdømt fra start? Det vil man sige i mange miljøer, ja. Men forfatterne svarer ret koldt og roligt, at agilitet simpelthen ikke er gratis. Særligt ikke inden for deep tech. Nej, software og hardware er jo to meget forskellige ting. Ja, og hvis tilpasning er for dyrt, så bliver eksperimentet pludselig en fælde. Det fortæller dig bare, at du tager fejl, uden at du overhovedet har råd til at rette op på det. Wow, det er en ret deprimerende tanke. Du køber en billet for at få at vide, at du er færdig. Lige præcis. Men hvad så med en anden bremseklods, du nævnte? Tegnregnet eller imitationsrisikoen? Ja, det handler om truslen udefra. Hvis du viser dine kort for tidligt i et marked, hvor det er let at stjæle idéer, så gør de store spillere netop det. De kopierer dig. Har de et godt eksempel på det? De nævner Surge AI. De valgte at forblive fuldstændig under radaren i det, man kalder stealth mode. Og hvornår kom de så frem i lyset? Først da de nåede $1 milliard i omsætning. $1 milliard i stealth mode. Det er jo helt vanvittigt. Ja, men det var simpelthen for at undgå at blive kopieret. IT-branchen har ofte ret svag IP-beskyttelse, altså patenter og den slags, så at skjule sig var et aktivt forsvar. Det giver mening. Så hvis vi kigger indad et øjeblik, mange iværksættere og vel også forskere for den sags skyld, vi elsker jo vores egne idéer. Ret højt endda. Og ja, nogle gange lidt for højt. Præcis. Hvad sker der i deres model, når vi er blindet af vores eget intellekt, og det produkt, vi bygger, samtidig er enormt komplekst? Det er en af mine yndlingsdele af papiret, det her. De modellerer nemlig grundlæggerens bias, altså når dine antagelser som stifter er langt væk fra virkeligheden. Ja, og ironisk nok så viser deres matematik, at jo mere fejl grundlæggeren tager, jo større er værdien af eksperimentet. Ja, forudsæt at man evner at læse signalet. Hvis du er på vej direkte ud over kanten af en klippe, så er et vejskilt, der siger stop, pludselig utrolig værdifuldt. Ja, hvis du vel at mærke har øjnene åbne. Lige nøjagtigt. Men de stopper ikke der. De udvider modellen fra bare at handle om et simpelt produkt, til at kigge på multidimensionelle produkter. Multidimensionelle produkter? Altså produkter, der har flere forskellige facetter, der skal fungere samtidigt? Ja. Det er vel lidt ligesom, hvis jeg skal prøve med en ny analogi. Det er ligesom at tjekke, om bilen har luft i dækkene og benzin på tanken, men man glemmer fuldstændig at tjekke, om man overhovedet har bilnøglerne. Aha, præcis. Hvis bare en dimension fejler, så kan du ikke køre nogen steder. Forfatterne uddyber det med et eksempel omkring DoorDash. Madudbringningstjenesten? Ja, de eksperimenterede klogt nok med 3 dimensioner på én gang. Forbrugernes lyst til at bestille, restauranternes villighed til at deltage, og om de overhovedet kunne skaffe chauffører. Det er jo 3 meget uafhængige ting, der alle skal virke. Nemlig. I kontrast til det nævner de Dropbox, som faktisk begik en fejl her. Dropbox? Men de er jo kendt som den ultimate startup-succeshistorie. De lavede den der video for at teste interessen. Ja, og de testede kundernes interesse helt genialt. Problemet var bare, at de glemte at teste omkostningerne ved at skaffe kunderne. Ja, og da de lancerede, fandt de ud af, at det var enormt dyrt at anskaffe hver enkelt kunde via annoncer, hvilket næsten væltede dem i starten. Okay, så hvis man har flere dimensioner, skal man teste dem alle sammen? Nej, og det her det bliver utrolig kontraintuitivt. De introducerer et genialt fund, de kalder suboptimal fuld eksperimentering. Suboptimal? Så nogle gange er det simpelthen en fejl at teste alt? Ja. Hvis de forskellige funktioner i produktet hænger stærkt sammen, hvis de er højt korreleret, så er det spild af penge at teste med alle. Har de et eksempel på, hvordan det virker i praksis? Det lyder vildt. Ja, de fremhæver virksomhederne Loyal og Lia Labs. De arbejder med livsforlængende medicin. Okay, til mennesker? Ja, på sigt.
Men de valgte bevidst at teste medicinen på hunde i stedet for mennesker. Vent, hvorfor? Fordi menneskedimensionen ville kræve massive regulatoriske godkendelser og koste en formue at teste. Men hunde og menneskers aldringsmekanismer er så stærkt korreleret i den her kontekst, at hundedimensionen gav et fuldstændig retvisende, men utroligt billigt signal. Ej, det er jo egentlig ret klogt. De undgik papirarbejdet for mennesker, men fik dataen alligevel. Lige præcis. De sparede millioner, fordi de forstod, at de ikke behøvede at teste alle dimensioner for at kende svaret. Så man behøver faktisk ikke at følge andres faste regler for at skabe noget nyt. Det er en ret beroligende erkendelse. Ja, den klassiske drejebog er ikke altid den rigtige. Hvis vi skal opsummere samtalen lidt her mod enden, for de akademikere, der lytter, så formaliserer den her artikel jo egentlig noget, vi intuitivt godt ved. Ja, gennem det her begreb, de kalder Return to Experimentation, eller RTE. Det er en fantastisk matematisk tærskel, der elegant integrerer både støj, omkostninger og risikoen for at blive kopieret. Og hvad med de praktikere og investorer, der lytter? Budskabet til dem er klart. Stop med at tvinge alle startups til automatisk at lancere en MVP. Evaluer først kvaliteten af signalet, omkostningerne ved at dreje skuden og risikoen for tyveri. Det gør rigtig god mening. Før vi skilles i dag, vil jeg gerne efterlade dig med en tanke, som papiret kun lige ridser i overfladen af, men som ændrer næsten alt. Hvad sker der egentlig, når selve det eksperiment, du udfører, ændrer markedet permanent? Det er et spændende spørgsmål. Ja, for hvis dine konkurrenter ser din test og proaktivt ændrer deres strategi for at blokere dig, er det signal, du får, så et sandt spejlbillede af kunden, eller er det bare et spejlbillede af dine konkurrenters modtræk? Ja, sandheden står jo sjældent stille, mens vi forsøger at måle den. Nej, netter. Det er noget at tænke over. Tak fordi du brugte din tid og lod tankerne vandre sammen med os i dag. Vi opfordrer dig til at lade perspektiverne slå rødder, indtil vi lyttes ved i den næste udsendelse.